Good evening, everyone. Warm welcome to Regulatory Bodies YouTube channel by Textbook. My name is Madhav Sir. I welcome you all in the next session and a very important session. So today we will be covering the finance current affairs related very important segment. We call it as RBI circulars. So we have already done the most important RBI circulars for March, April, May, June and July, and even I have given you the PDF for the same, where I have discussed around 50 questions for these 3 months. And trust me guys, these 50 circulars which we have discussed, they are really very important. So today we have around 28 circulars, if I'm not wrong, which we are going to discuss in today's session. But in today's session, I have made certain changes, keeping in mind the importance of these circulars, because these are the most latest one and we can expect majority question from these circulars only. So first of all, I will be discussing the summary of each and every circular with you. Then we'll collectively solve a question on the same, and I'm pretty sure you are going to enjoy this discussion. But before I start, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन बता दीजिए क्या मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, एवरीथिंग इज फाइन. If you have already hit the like button, it's okay. If you haven't hit the like button, I would request you do like the session, and if we are good to go, just give me yes sir. I want everyone to reply, please. I want everyone to reply. Give me yes sir if everything is fine. We are good to go, so that we can begin the discussion without any further delay. Chal, let's get started. So the first point is, if you want to download the PDF of this particular session, that will be available on my Telegram channel. You can download the PDF, and let's get started with the first one. So today's first circular is related to special rupee vostro account. We all know that what are these special rupee vostro accounts. So these are the accounts which are opened by foreign banks. Foreign banks, they open up a rupee account in the Indian banks in India itself, so that they can make the Indian transactions, or I would say they can make the settlement of imports from India in the INR itself. For that particular purpose, special rupee vostro accounts are majorly utilized. Now the question over here is, so RBI has come up with certain announcement related to the same. What is the announcement done? So RBI has come up with the announcement that RBI has removed the prior approval requirement for opening a special rupee vostro account for foreign banks. What does it mean? Sir, earlier when a foreign bank was applying for a special rupee vostro account in Indian bank, so Indian banks needs to seek permission, approval from RBI, and until and unless the approval is given by RBI, they are not allowed to offer the special rupee vostro accounts to these entities. But now RBI said that I am removing this criteria. There is no need. If you want to open an account, you can directly reach out to the Indian bank and you can open up the special rupee vostro account. So India has become now open SVRA directly, simplifying the process. As SRVAs, that is special rupee vostro accounts, are the accounts held by Indian banks on the behalf of the foreign banks in order to facilitate international trade settlements in the INR. Purpose kya hai? Sir, it will enable import-export settlement in INR. It will reduce the dependency on foreign currencies like US dollars, euro. It will also promote the internationalization of INR, and even it will facilitate trade with countries under the sanctions or with limited US access. तो जिन countries के ऊपर sanction लगा दिया यूएस ने, या फिर जिन कंट्रीज के पास यूएस डॉलर ही लिमिटेड है, फॉर दोज कंट्रीज आल्सो दीज अकाउंट्स आर गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज रिलेटेड टू दी स्पेशल रुपी vostro अकाउंट्स ओनली. आरबीआई हैज आल्सो आस्क्ड दैट the surplus funds in these special rupee vostro accounts can be invested in the government securities. I'll discuss this in much detail in some time, but you give me the answer in the comment section whether it is central government securities or state government securities or both. So in July 2022, RBI has introduced the special rupee vostro account for INR based international trade. August 2025, RBI relaxes the norms, removing the prior approval for opening the SRVAs. Reason: encourage the wider adoption of INR in global trade, reduce procedural delays for the bank, support bilateral trade with countries like Russia, Sri Lanka, UAE, strengthen India's financial sovereignty, as well as boost ease of doing business for the exporters as well as importers in the country. Benefits: Indian exporter को benefit होगा कैसे? सर, अगर आप एक Indian exporter है and you are selling out your goods in US और मे बी इन रशिया, और रशिया के ऊपर अगर सैंक्शन लगा तो रशिया के बैंक का जो अकाउंट है
in India, from that particular bank account, you will receive the payment against your exports, and that too in INR itself. So there will be no risk of foreign exchange rates. Foreign buyers, so they pay in Indian rupee, easing trade when US dollar is inaccessible. So for the Russian buyer, it is also easy because Russian is not having the access to the US dollar, but still they can buy the products from India because they can make the payment in INR. Banks, lower forex cost, faster settlement. अब यहाँ पे faster settlement होगी by the banks and it will reduce the dependency on US dollars. अब इसका economic and strategic impact क्या होगा? Very important point. Geopolitical, it helps in bypassing the Western sanctions, strengthens South-South trade. Financial markets, and it will increase the internationalization, or it will increase international INR demand, aiding rupee internationalization, and it will support the MSMEs in exporting, export markets, faster regional trade integration and whatnot. ठीक है जी, समझ आ गया ये point? If this point is clear till this part, just give me yes sir. Just give me yes sir. Ready to solve the question, guys? Ready to solve the question? Question solve करें इस पे. चलो, let's get started with the question. Only central government securities, that is true. Question पहला आपकी स्क्रीन पर है. Which of the following statements about the special rupee vostro account is correct? Special rupee vostro accounts, they require prior RBI approval to be opened by Indian banks. For foreign correspondent banks, RBI approval require prior RBI approval? No sir. Now no prior approval is required. So first is wrong. SRVAs facilitate international trade settlement primarily in INR rupees or in Indian rupees. So keeping that in mind, second statement is also wrong. Keeping that in mind, second statement is also wrong. Moving on to the third one. The third statement says one of the key purpose of SRVAs is to promote internationalization of Indian rupees. That is correct. SRVAs were introduced by RBI in 2022. They were not introduced in 2025, rather they were introduced in 2022, July 2022 to be very precise. Indian exporters face higher exchange risk when using, no. If SVRAs are used, the risk is mitigated, the foreign exchange risk is mitigated for the Indian exporters. So only one statement is correct, that is the B option. समझ आया? मजा आया? आज आपका confidence बढ़ा होगा because I have given the entire description of the question first, then we have discussed the then I am looking for the answer from you all guys. So it will boost your confidence. It will obviously help you to understand the concept in a much better manner. Moving on to the second question. Second question क्या कहता है? So second question कहता है RBI co-lending agreement direction. इससे पहले banks जो थे, so banks they were providing loan to NBFCs so that NBFCs can provide loan to the entities, and even this co-lending was allowed under the priority sector lending format. And related to this priority sector lending format, the RBI notification, RBI circular was also released. But now RBI has come up with a new understanding where RBI is saying that from now onwards, every regulated entity can provide loan to the other regulated entities so that they can provide loan to the public. So this process is termed as co-lending, where two regulated entities, they come together to provide loan, out of which one is known as the originator entity. Originator entity का मतलब क्या हुआ सर? जहां से आपका लोन originate हो रहा है, जहां से आपका लोन originate हो रहा है, and the other one is participating entity जो कि participate कर रही है in the lending. ठीक है, अब इससे related कुछ conditions हैं which we are going to understand in this discussion. So RBI has issued the co-lending agreement direction 2025 to provide comprehensive framework for regulated entities which include banks, all India financial institutes, NBFCs to co-lend to the borrowers. These directions are going to be effective from 1st of January 2026. Existing co-lending agreements, they follow the older rules unless regulated entity opt for early compliance. So अगर आप 1 जनवरी से पहले early compliance को opt करते हैं, then you will be opting them. Otherwise from 1st January you will be opting for sure. These orders are issued under Banking Regulation Act, RBI Act as well as NHB Act. Purpose is to expand co-lending beyond priority sector lending, ensure prudential norms, customer protection, transparency as well as regulatory clarity. If I talk about co-lending, so the word co-lending gives us a confusion with
syndicated loan as well as consortium loan. So remember that co-lending means we have originating regulated entity, partner regulated entity used for retail, MSME, housing, asset finance, blended interest rate, loan origination as well as servicing primarily by originator. तो यहाँ पे जो service है it is done by the originator. Mandatory retention of the originator is greater than equals to 10%. तो जो आपका originator है उसकी जो minimum contribution होनी चाहिए इस lending में that should be at least 10%. Syndicated या syndicate loan की अगर हम बात करें, lead arranger and multiple lenders. तो एक lead arranger है which will arrange the lead, then multiple lenders will come together and many large corporates or project finance margin based pricing, active secondary market witness in case of syndicate loan. But in case of moving on to the next one is consortium loan. Group of banks come together similar to syndication but it is less standardized. तो अगर हमसे कोई पूछे consortium loan और syndicate loan में ज्यादा स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ लोन कौन सा है, ज्यादा स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ लोन जो है सिंडिकेटेड लोन है. प्राइमरीली लार्ज कॉर्पोरेट और प्रोजेक्ट बोरोवर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कैटेगरी. तो हम बात कर रहे हैं को लेंडिंग की. इन केस ऑफ को लेंडिंग ईच रेगुलेटेड एंटिटी मस्ट रिटेन एटलीस्ट 10% ऑफ द लोन ऑन इट्स बुक. क्रेडिट पॉलिसी मस्ट कवर द को लेंडिंग लिमिट्स, target segments, partner due diligence as well as grievance redressal. Loan agreements, they must clearly disclose roles and single point of contact for the borrower. So obviously the originator is going to be single point of contact for the borrower. Blended interest rate, ये बड़ा important point है. So what is blended interest rate? So blended interest rate का मतलब है, मान लो दो entities हैं, regulated entity 1 दूसरी है 2. regulated entity 1 ने 80% लोन दिया, regulated entity 2 ने 20% लोन दिया. जो एंटिटी 1 है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेंडिंग रेट है, दैट इज लेट्स से 7% और इसका जो लेट्स मेक इट 9%, ये 9% है और लेट्स से दिस इज 10%. तो अब इसका जो रिजल्टेंट लेंडिंग रेट निकलेगा दैट विल बी वेटेड एवरेज. 9 into 80 is 720% प्लस 20 into 10 is 200% और एक कॉमन परसेंटेज और है जो दोनों में इन्वॉल्व था. परसेंटेज जगह मैंने 100 लगाया तो ये आ गया 920% डिवाइडेड बाय 100. तो उसके हिसाब से अगर आप निकालोगे तो 9.20% इज गोइंग टू बी दी वेटेड एवरेज ऑफ द पार्टिसिपेटिंग रेगुलेटेड एंटिटीज रेट. अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है, पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी मस्ट टेक लोन शेयर ऑन बैक टू बैक बेसिस. लोन शेयर ऑन बैक टू बैक बेसिस मतलब जो पार्टनर एंटिटी है वो अपने लोन को बैक टू बैक बेसिस पे रिफ्लेक्ट करेगा इन द बुक्स ऑफ द रेगुलर पार्टनर एंटिटी. जो आपका लोन है दैट शुड रिफ्लेक्ट विद इन 15 डेज. बोरोर लेवल की बात करें, असेट क्लासिफिकेशन मैंडेटरी. बोरोर लेवल पे असेट क्लासिफिकेशन इज मैंडेटरी एंड द असेट क्लासिफिकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू द अदर एंटिटी एज वेल. ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी मे प्रोवाइड default loss guarantee but only and only up to 5% of loan, not above 5% of loan. Not above 5% of loan value, default loss guarantee is allowed as per the RBI norms. Public disclosure of co-lending agreement partners, loan quantum, rates, fees, sector finance, loan performance, everything is need to be disclosed with the public. If I talk about the operational aspect, so there is a requirement of escrow account, separate borrower account, audits are need to be done, business continuity plans are need to be revised, as well as you have to check the KYC norm fulfillment. Now if I talk about the key updates from the 2020 PSL rules, so before this 2020 priority sector lending rules were there where banks were allowed to provide or banks were allowed to involve in co-lending process for their priority sector lending targets. Now the scope has been expanded from priority sector lending to all the lending sectors including the housing finance companies. Minimum retention which was earlier 20%, it has been now reduced to 10%. It has been now reduced to 10%. इसका मतलब ये है, पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी मान लो कि SBI है, SBI और NBFC है कोई वन, उन्होंने मिलकर एक को लेंडिंग की और उस को लेंडिंग में दे हैव गिवन लोन ऑफ 50 lakhs. ठीक है, 50 लाख में के लोन में से 10 लाख का लोन NBFC 1 ने दिया, 40 lakhs का लोन SBI से आया, तो SBI को दिस शुड बी अपडेटेड विद इन 15 डेज. अब हो सकता है 2 साल के बाद सेम बोरोवर को यू आर एडिंग 25 lakhs मोर, तो वो जो 25 lakhs आपने मोर ऐड किया, 5 लाख NBFC से, 20 लाख SBI से, तो SBI फिर से वो 20 लाख बैक टू बैक ऐड करेगा अपने बुक्स में विद इन अ टाइम लिमिट ऑफ 15 डेज.
विद इन अ टाइम लिमिट ऑफ 15 days. समझ आ गई बात? क्लियर हो गया ये पॉइंट? इफ दिस पॉइंट इज क्लियर जस्ट गिव मी यस सर. ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं. अब मैं अगले पॉइंट पे बढ़ूं तो अगला पॉइंट क्या कहता है? ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट फॉर्मूला मैंडेटरी है. देन वी हैव डीएलजी. डीएलजी मैंने अभी आपको बताया, डिफॉल्ट लॉस गारंटी कैप पहले भी 5% था, आज भी 5% है. 15 दिन में ट्रांसफर टाइमलाइन स्ट्रिक्टली एनफोर्स और केएफएस डिस्क्लोजर वो आज भी इन्वॉल्व. ठीक है, तो ओवरऑल जो बेसिक चेंज हुआ है वो यही है कि जो सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे था, इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स. बट यहाँ पे जो कैपिंग थी दैट वाज अर्लियर 20% which has now been reduced to 10% which is very important. Remember that. क्वेश्चन सॉल्व करें. क्या कहता है क्वेश्चन? Which of the following statement about RBI co-lending agreement direction is correct? Co-lending direction apply to small finance banks, local area banks as well as regional rural banks. Say yes or no. Say yes or no. Sir, ये जो co-lending agreements है, they are applicable to all the scheduled commercial banks. They are applicable to all the banks, all India financial institutes as well as NBFCs, but they are not applicable to small finance banks, local area banks as well as regional rural banks. So this is an incorrect statement. Each regulated entity must retain a minimum of 10% of every co-lent loan on its own book. That is true. अपनी बुक पे आपके पास कम से कम 10% की लेंडिंग होनी चाहिए. Default loss guarantee under the co-lending agreement is capped at 10% of loans outstanding. No sir, ये जो capping है, this is 5%. This capping is allowed 5%. There is no 10% capping allowed. Borrower level asset classification is optional. Regulated entity can classify the loans individually. नहीं सर, अगर आपकी borrower की जो asset classification है, if it is done on the regulated entity, it should be passed on to the partner regulated entity, or partner regulated entity should also change the asset categorization for the given loan. मान लो अगर आपका loan standard से substandard हो गया, same will be forwarded to the partner entity and partner entity will also make the desired changes. Interest charged to borrowers under the co-lending agreement must be blended rate based on participating regulated entity shares. Yes, as we have already discussed. तो उस basis पे आंसर क्या होगा? B option 2 and 5 are correct. Moving on to the third announcement. The third announcement, as I was talking about, it is again related to the special rupee vostro accounts. So firstly, now RBI approval is not required before opening up special rupee vostro accounts by the Indian banks, by the foreign banks in the Indian financial institutes. So the prior approval is not required. That was the first change which has been announced by RBI. The second change which has been announced by RBI is कि भैया ये जो आपका स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट है, अब उस अकाउंट में सरप्लस फंड्स होंगे. क्यों सरप्लस फंड्स होंगे? कि अगर मैं रशिया की ही बात करूं, विद रिस्पेक्ट टू रशिया, इंडिया इज इंपोर्टिंग मोर फ्रॉम रशिया इन कंपैरिजन टू द एक्सपोर्ट्स व्हिच इज डन टू रशिया. तो अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है लेकिन इंपोर्ट ज्यादा, और उस इंपोर्ट की पेमेंट वी आर डूइंग इन INR in these vostro accounts, so obviously these vostro accounts they will be flooded with INRs. और भैया इन INRs को यहाँ पे फ्लड करके फायदा क्या? रशियंस दे नीड द फंड्स, रशियन शुड यूटिलाइज दीज फंड्स. ऑब्वियसली ये जो आपका रशियन एक्सपोर्टर है उसको तो पैसा आपके बैंक ने दे दिया इन द फॉर्म ऑफ रूबल ओनली. एक्सपोर्टर को तो पैसा मिल गया, इट्स फाइन. बट अगर मैं बैंक की बात करूं, रशियन बैंक का जो पैसा इंडिया में INR फॉर्म में पड़ा और दे हैव paid in form of ruble, they must be looking forward to earn return on it. So in order to earn return on it, RBI has come up with the picture. RBI said that RBI has allowed the NRIs as well as other foreign entities which are holding the special rupee vostro accounts to invest surplus rupees in the central government securities, including short-term treasury bills. So it has been implemented with the immediate effect and it has been allowed under Foreign Exchange Management Act 1999, and this measure is without prejudice to other approvals required under any other law. तो अगर मैं बात करूं पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ आइडल रुपी बैलेंसेस इन SRVA, promote INR internationalization by increasing the cross-border acceptance, deepen and improve the liquidity in government securities and treasury bills. तो आपको दो फायदे हो गए. एक तो जो पैसा
वेस्ट पड़ा था आपकी इकोनॉमी में, वो आपकी इकोनॉमी में काम आ गया, एंड एज अ गवर्नमेंट यू आर गेटिंग एक्सेस टू अ न्यू सोर्स ऑफ liquidity, to a new source of investment. So for a government it is beneficial, for a account holder also it is beneficial. What are the key regulatory changes? RBI revised its non-resident investment. RBI revised its non-resident investment in debt instrument direction 2025. तो RBI ने अपनी non-resident investment in debt instruments direction 2025 को रिवाइज किया है, जिसमें ये कहा गया है authorized dealer category 1 banks, they must inform the clients and they should implement these rules right away. So special rupee vostro accounts, surplus can be invested in central government securities and even in the treasury bills, which will be a beneficial situation for all the parties which are involved. Now let's try to solve the question. Which of the following statement about the RBI's provision allowing NRI to invest surplus SRVA's balance is correct? NRIs now can invest surplus balances in special rupee vostro account only in corporate bonds, not government securities. So that is wrong. That is wrong. Now they are allowed. Now they are allowed to invest in government securities. They are allowed to invest in government securities. So tell me whether they are allowed to invest in corporate bonds also. Whether the SVRA surplus can be invested in corporate bonds also. Say yes or no in the comment section. Give me the answer, guys. Moving on to the next statement. The direction were issued under section 10 as well as section 11 of Foreign Exchange Management Act. That is correct. Special rupee vostro account was introduced in July 2022. That is true. Implementation. The authorized dealer category 1. Authorized dealer category 1 banks are responsible for implementing these provisions. So this is wrong. Treasury bills are short-term government securities issued at a discount with no periodic interest rate. Yes sir, because they are zero coupon bonds, they are zero coupon instruments which have no interest, rather they are sold out at discount and redeemed at 100% value. So answer to this particular question will be 2, 3, 5 are correct. B option is absolutely correct. Absolutely correct. Badhiya. Chalo. Agla question. The next question says continuous clearing and settlement of realization in चेक ट्रंकेशन सिस्टम. आई होप आप सबको याद होगा चेक ट्रंकेशन सिस्टम की कहानी. अब अगर आपके पास एक अकाउंट पे ही चेक है, देन इफ यू आर अ पे you will be visiting to your bank will be termed as collecting bank. So earlier your collecting bank was accepting the checks in two different windows. There were two different windows allowed in which the check was collected, but now the check will be collected on continuous basis. So check collection will be done on continuous basis at 10 a.m. from 10 a.m. to 4 p.m. Not only collection, this check will be continuously presented. So presentation will be done. Presentation means scanning of the check will be done. It's magnetic ink character reader. Details will be shared along with the scanned copy to the National Automated Clearinghouse, and from the National Automated Clearinghouse, it will be presented to the paying bank. Once the paying bank receive it, it will be responsible to clear the check within 10 to 7 p.m., 10 a.m. to 7 p.m. till 2nd of January. From 3rd of January onwards, this clearing will be done within 3 years. Within 3 hours. This clearing will be done within 3 hours. अगर आपने within the timeline reply नहीं किया, then it will be automatically considered positively confirmed, and once the confirmation reaches to the collecting bank, the amount will be credited into the account holder or into the pay's account within 1 hour. तो अब मान के चलो कि 4 से 5 घंटे में 3 जनवरी के बाद और आज की डेट में 1 दिन में आपके चेक जो है वो क्लियर हो जाएंगे. तो मैंने यहाँ पे पूरी कहानी आपको समझाई थी. प्री CTS क्या था, प्री चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2, 3, 4 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 14 दिन तक लगते थे जब हम पुराने दिनों की बात करें. फिर CTS आया, चेक ट्रंकेशन सिस्टम आया 2008 में. उसके बाद टाइमलाइंस कम हुए, टाइमलाइंस कम होकर T+1 पे चले गए. जनरली इन 2 days चेक इज क्लियर दीज डेज, बट चेक की इंपॉर्टेंस कम हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस टाइम पीरियड. इस टाइम पीरियड को कम करने के लिए, फ्लोटिंग टाइम को कम करने के लिए दिस इनिशिएटिव हैज बीन टेकन वेयर सिंगल प्रेजेंटेशन विंडो 10 AM to 4 PM. अब यहाँ पे कोई बैच वाइज कलेक्शन नहीं होगा. इट विल बी अ कॉन्टिन्यूस प्रेजेंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ द चेक. नेक्स्ट इज confirmation session 10 AM to 7 PM today, and from 3rd of January onwards this confirmation session will be of 3 hours. और जैसे ही सेटलमेंट होगा, confirmation आएगा within 1 hour, amount will be credited into the
पेज अकाउंट। उसमें एक और टर्म है पॉजिटिव पे सिस्टम। अगर आपको याद हो, दिस पॉजिटिव पे सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई, where RBI has asked the banks to come up with a mandatory situation in case of checks of value more than 5 lakhs. So if the check value is more than 5 lakhs, it is mandatory that the customer must pre-register the check details. Otherwise, this check will not be cleared. Earlier, there was a timeline of almost 24 hours where the bank can do this confirmation. But now this confirmation is need to be done by the bank and within 3 hours. So customer has to pre-notify the bank the moment you write a check of 5 lakh value or more, or as per the mandatory limit set by your bank, which should be above 50,000, you have to inform your bank with the alternative channel through SMS or maybe visiting the branch or maybe through the online banking. Otherwise your check will not be cleared, it will be rejected, it will not be accepted. Got it guys? Clear होगी सारी कहानी? अब इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. Which of the following statement about the continuous clearing and settlement in CTS is correct? Phase 2 of CCS required RBI Bank to confirm the check status within 3 hours of the presentation. That is true, which will be implemented from 3rd of January 2026. Float time increases under CCS. No sir, float time has decreased under CCS, which was earlier T plus 1. Now it has been reduced to T plus 0 or even T plus 3 hours. Positive pay system is optional for checks. No sir, positive pay system is mandatory for checks with a value greater than 5 lakhs. लेकिन 50,000 के ऊपर के वैल्यू पे बैंक कैन फिक्स द पीपीएस वैल्यू मैंडेटरी सिचुएशन एज पर द बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी. फिर चाहे वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे करे, लेकिन 5 लाख के ऊपर तो करना ही पड़ेगा. ये आरबीआई की नॉर्म है. प्रेजेंटिंग बैंक मस्ट क्रेडिट कस्टमर विद इन 1 आवर आफ्टर द आरबीआई फाइनलाइज द सेटलमेंट. जैसे ही आपकी सेटलमेंट फाइनलाइज होगी, सेटलमेंट के फाइनलाइज होते ही 1 घंटे के अंदर अंदर यू हैव टू क्रेडिट the amount. That is true. CCS completely removed the requirement of RBI Bank to manually verify the checks even for potential fraud. No sir, this is wrong. This is wrong. RBI Bank जो है, it will obviously RBI Bank must still manually or automatically verify the PPS and other check details. CCS does not fully remove the fraud verification responsibility. It is still pending, it is still involved, it is still existing. So answer is going to be 1 and 4. So A option is correct. Rest all the options are incorrect. ठीक है जी, क्लियर हो गया? मजा आ रहा है? Give me yes sir. Moving on to the next one. अगला क्वेश्चन कहता है RBI सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज कस्टमर ऑफ बैंक डायरेक्शंस. तो इस डायरेक्शन पे हमने बात की थी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो एक आपको याद रखना है, थ्रेशोल्ड. आरबीआई ने थ्रेशोल्ड फिक्स किया है 15 lakhs फॉर ऑल दी बैंक्स. 5 lakh rupees is the threshold limit in case of cooperative banks. ठीक है, एक पॉइंट तो ये याद रखना है. दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है द कंडीशंस which are introduced. If the claim value is below the threshold limit, so that is done through the easy format. Otherwise, if the claim value is above the threshold limit, तो उस केस में we need the certification, we need the approvals, we need the court issued certificates in order to complete the transaction. अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या? So these are the minimum threshold limits which have been fixed by RBI, but bank may increase these threshold limits. It's okay if bank is increasing these threshold limits, there is no issue with that. ठीक है जी. Now let's try to decode this entire story. RBI issued directions to standardize settlement of claims in deposit accounts, safe deposit lockers, as well as safe custody articles. Objective is to streamline the procedure, reduce financial or emotional hardship, enhance customer service, as well as ensure time-bound and hassle-free claim settlement. Legal basis की बात करें, powers have been given under Banking Regulation Act 1949, which is applicable for all the commercial banks as well as all the cooperative banks. Definitions में nomination क्या है आपको पता है, survivorship clause क्या आपको पता है, apostille clause is basically related to the individual who passed away outside India and उसकी authentication आ रही है इंडिया में that yes this individual has passed away but not in India, outside India, ताकि वो जो authentication आएगा, that approval आएगा, उसकी मदद से जो भी उनके account settlements है in India that can be done. ठीक है. अगला point क्या आता है? The next point which is important with this respect is that is probate. Can you give me the answer? What is the meaning of probate? Any idea? What is the meaning of probate? So if this question is asked what is probate,
प्रोबेट विल लीगल हियर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एस्टैब्लिशिंग द एंटाइटलमेंट। तो प्रोबेट क्या है, विल क्या है, लीगल हियर सर्टिफिकेट क्या है। सो दीज आर दी टेक्निकल लीगल इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी मदद से आपकी जो ओनरशिप है ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट या लीगल अथॉरिटी ऑन अ पर्टिकुलर एसेट डिफाइन की जाती है। ठीक है जी, तो ये 3 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट मेरा आपके सामने है, इन केस ऑफ मिसिंग पर्सन देयर इज अ रिवीजन डन। आप अपने दिमाग में सोचे रखना वो रिवीजन क्या है। आई विल बी डिस्कसिंग दैट रिवीजन एज वेल विद यू इन सम टाइम। सो डिपॉजिट अकाउंट्स की अगर हम बात करें विद नॉमिनी और सर्वाइवरशिप क्लॉज, अगर नॉमिनी डिफाइंड है या फिर सर्वाइवरशिप क्लॉज है, देन बैंक कैन रिलीज द फंड्स डायरेक्टली टू द नॉमिनी और टू द सर्वाइवर आफ्टर वेरीफाइंग द डेथ एंड आइडेंटिटी। नो कोर्ट ऑर्डर, succession certificate or surety required, payment treated as a valid discharge। अगर नॉमिनी नहीं है उस केस में क्या होगा सर, अगर नॉमिनी नहीं है और क्लेम की वैल्यू लेस देन 15 लाख है या लेस देन 5 लाख है, सो सेटलमेंट विद क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, KYC, indemnity bond and no objection certificate from all the other legal heirs can be done without court order, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे का क्लेम वैल्यू। अगर क्लेम वैल्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड लिमिट, देन उस केस में यू रिक्वायर सक्सेशन सर्टिफिकेट और एफिडेविट बिफोर द मजिस्ट्रेट, जिसकी मदद से यू कैन रेज द रिक्वेस्ट फॉर द क्लेम। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है जी, अगला पॉइंट, अगर हम बात करते हैं डिपॉजिट अकाउंट्स की, तो पाइपलाइन फ्लोज कैन बी सर्टिफाइड टू अ स्टेट ऑफ लेट डैश अकाउंट फॉर रिटर्न टू रिमिटर पर हियर इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है सर, अगर मैं बात करता हूं एक डिपॉजिट अकाउंट है और उस डिपॉजिट अकाउंट में पेंशन, डिविडेंड क्रेडिट की जाती है, सैलरी क्रेडिट की जाती है। सो ये जो क्रेडिट है दैट कैन बी डन, बट दैट कैन बी डन एट द नेम ऑफ द इंडिविजुअल हु विल बी टर्म्ड एज एस्टेट ऑफ लेट सो एंड सो। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अलाउड विदाउट पेनल्टी। अगर एक इंडिविजुअल है, उनकी एफडी थी एंड ही हैज पास्ड अवे एंड नाउ द लीगल हियर और द नॉमिनी इज ट्राइंग टू क्लोज डाउन the pre-mature FD, it will be done without any penalty. For joint accounts, survivor plus here must be giving the consent unless it won't be allowed। तो अगर आपका एक joint FD है, उसमें जो जिसकी डेथ हुई है उनका लीगल हियर और जो सर्वाइवर है वो मिलकर अगर अलाउ करेंगे तभी वो FD को प्री मैच्योर सिचुएशन में क्लोज किया जाएगा, वरना नहीं। मिसिंग पर्सन के केस में वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ मिसिंग पर्सन क्लेम अप टू बैंक डिफाइंड थ्रेशोल्ड लिमिट will be allowed with FIR and police non-traceable report plus indemnity without waiting for 7 years। अब 7 साल वेट करने की जरूरत नहीं है इस केस में। अगर आपका क्लेम वैल्यू अप टू 1 लाख है तो उस केस में यू कैन डायरेक्टली रीच टू द कोर्ट, you can directly reach to the bank with your identification as well as FIR copy and police non-traceable report। अब अगर मैं सेफ डिपॉजिट लॉकर की बात करूं विद नॉमिनी, तो सिंपल है सर, दे दो, कोई टेंशन नहीं है। विदाउट नॉमिनी में क्लेम सेटलमेंट विल बी डन वाया क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल द लीगल हियर सर्टिफिकेट, इंडेमनिटी बॉन्ड, इन्वेंट्री रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस एंड बैंक स्टाफ इज नीड टू बी डन। डिस्प्यूटेड केसेस में सेटलमेंट वाया प्रोबेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से आपका सेटलमेंट किया जाएगा। These are some of the things which you need to remember। बाकी सारी ठीक है। लास्ट पॉइंट में ये टाइमलाइंस, 15 दिन के अंदर जैसे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए उसके 15 दिन के अंदर आपको आपका क्लेम मिलना चाहिए। और अगर आपको वो क्लेम नहीं मिलता, इफ यू डोंट गेट योर क्लेम, देन इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो यू विल बी एलिजिबल टू गेट कॉम्पनसेशन ऑफ द डिले। और ये जो डिले का कॉम्पनसेशन है वो कितना होगा सर, डिले का जो कॉम्पनसेशन है वो कितना होगा सर, दैट विल बी बैंक रेट प्लस 4% विल बी द इंटरेस्ट रेट। बैंक रेट प्लस 4% विल बी द इंटरेस्ट रेट जो पे किया जाएगा एज अ कॉम्पनसेशन। और लॉकर के केस में जो कॉम्पनसेशन है दैट विल बी 5,000 रुपीज पर डे फॉर एवरी डे विच इज बीन इन द कैटेगरी ऑफ डिले। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 से इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाएगा, द इंस्ट्रक्शंस व्हिच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। आओ जरा आंसर ढूंढते हैं, आंसर ढूंढने में मजा आएगा। बैंक कैन रिलीज फंड्स to a nominee or survivor without succession certificate irrespective of account balance। So बैंक रिलीज करेगा फंड्स नॉमिनी को या सर्वाइवर को विदाउट सक्सेशन सर्टिफिकेट, बिल्कुल ठीक है। फॉर क्लेम अबव थ्रेशोल्ड लिमिट इन अकाउंट विदाउट नॉमिनी, नो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, गलत है सर, यहाँ पे कोर्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है।
श्योरिटी रिक्वायर्ड है, उसके बिना फंड्स ट्रांसफर नहीं होंगे। सेफ डिपॉजिट लॉकर कॉन्टेंट्स ऑफ अ माइनर नॉमिनी कैन बी एक्सेस्ड बाय लीगल गार्जियन। तो अगर आपका एक माइनर नॉमिनी है, लॉकर कंटेंट है, तो क्या उनके लीगल गार्जियन द्वारा एक्सेस किया जा सकता है? बिल्कुल। कॉम्पनसेशन फॉर डिले इन सेटिंग लॉकर क्लेम्स इज बैंक रेट प्लस 4%। सर लॉकर के केस में तो आपको पता ही नहीं ना अमाउंट कितनी है। जब अमाउंट नहीं पता तो कैलकुलेट कैसे करोगे इंटरेस्ट? तो उस केस में तो 5,000 रुपए फिक्स्ड है जो आपको देना। क्लेम ऑफ द मिसिंग पर्सन कैन बी सेटल्ड बिफोर 7 years विद FIR, पुलिस नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट एंड इंडेमनिटी लेटर। Yes sir, this is allowed. So answer is going to be 135. B option is the correct answer. 135 B option is the correct answer. बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू रेगुलेटरी सैंडबॉक्स थीम न्यूट्रल ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी। इससे रिलेटेड अपडेट ये थी कि जो थीम न्यूट्रल है उस थीम न्यूट्रल को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इंट्रोड्यूस करने के बाद थीम न्यूट्रल से रिलेटेड जो टेस्ट था वो रन किया गया। टेस्ट रन करने के बाद ओनली वन प्लेयर was able to successfully exit and it will be implementing as per the scenarios। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात की गई, वो क्या कि सर ये जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है रिलेटेड टू थीम न्यूट्रल ऑन टैप फैसिलिटी अवेलेबल है। दैट मीन्स इफ यू थिंक दैट टुडे ऑल्सो यू हैव समथिंग विच यू वांट टू बी चेक्ड बाय द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, यू कैन अप्लाई फॉर इट। तो ध्यान दीजिएगा, RBI रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक कंट्रोल्ड लाइव टेस्टिंग एनवायरनमेंट है फिनटेक फर्म्स, स्टार्टअप्स, रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए टू टेस्ट देयर इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अंडर द रेगुलेटर सुपरविजन। ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इनोवेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एफिशिएंसी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। थीम न्यूट्रल कोहर्ट 5th कोहर्ट है 2023 से 2025, अलाउज एप्लीकेशन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल डोमेन अंडर RBI's रेगुलेटरी एम्बिट अनलाइक प्रीवियस कोहर्ट्स ऑन स्पेसिफिक थीम्स। तो इससे पहले जो कोहर्ट्स थे वो थे रिटेल पेमेंट, MSME लेंडिंग एंड व्हाट नॉट। ऑन टैप फैसिलिटी मतलब इट अलाउज कॉन्टिन्यूस सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द क्लोज्ड थीमेटिक कोहर्ट्स अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2021। पहला कोहर्ट था रिटेल पेमेंट्स, दूसरा था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, तीसरा था MSME लेंडिंग, फोर्थ था फाइनेंशियल लेंडिंग, एंड नाउ वी हैव द थीम न्यूट्रल वाज द 5th कोहर्ट। अब कहा गया कि जितनी भी क्लोज्ड थीम्स हैं उन सभी क्लोज थीम्स के लिए ऑन टैप फैसिलिटी विल बी अवेलेबल। सो अगर मैं बात करूं थीम न्यूट्रल की, तो सर थीम न्यूट्रल इज फोकसिंग रिलेटेड टू डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लेंडिंग, ऑल्टरनेट क्रेडिट स्कोरिंग, KYC, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, टोकनाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओपन फाइनेंस, solution for the differently abled, grievance redressal, sustainable finance, climate risk mitigation. These are the areas which are included under neutral theme। 5th cohort में एंटिटी जिसने एग्जिट किया, मतलब जिसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया 5th कोहर्ट के टेस्ट को, दैट इज इंडियन बैंक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन बैंक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी विच इज सेटअप बाय द बैंक्स लाइक ICICI बैंक, HDFC, येस बैंक, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। क्या है सर? ये ब्लॉकचेन बेस्ड डीप टियर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग सॉल्यूशन है। इसने जो प्रॉब्लम एड्रेस की थी वो ये कि टियर 2, टियर 3 MSME जो है दे फेस हाई बोरोइंग कॉस्ट और क्रेडिट डिनाइल। तो उन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया? इनवॉइस टोकनाइजेशन, टियर 1 सप्लायर इनवॉइसेस एक्सेप्टेड बाय द एंकर टोकनाइज्ड ऑन द ब्लॉकचेन। तो आपका जो टियर 1 सप्लायर है उनकी जो इनवॉइस है दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एंकर टोकनाइजेशन ऑन ब्लॉकचेन सो दैट funding against that invoice can be done। Token transfer, digital proof of accepted payment obligation transfer to deep tier supplier, as well as digital financing, banks and NBFC they will provide credit against tokenized invoices। मतलब क्या? ये समझो, आप MSME हो, ठीक है, आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा किसी कंपनी X से विच इज अ टियर 1 सप्लायर। अब उसको आपने वापस दिया इनवॉइस। अब ये जो इनवॉइस है दैट इज एक्सेप्टेड इन दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर्मेट, जहां पर इसके बदले में फंडिंग दी जाएगी टू दी X। दूसरी तरफ अगर MSME ने प्रोडक्ट दिया इन टियर 1, तो टियर 1 एरिया में एक Y बायर है, सप्लायर सप्लाईज। अगर मैं यहां पे ये कहूं कि
MSME सप्लाईज, तो उससे जो इनवॉइस मिलेगा दैट इनवॉइस कैन ऑल्सो बी डिस्काउंटेड, जिससे जो फंड रिक्वायरमेंट है MSME की दैट कैन बी फुलफिल्ड इजीली. दैट इज अ पॉइंट. अगला पॉइंट आता है कि सर ये जो डिजिटल कोहर्ट की अगर हम बात करें, डिजिटल फाइनेंसिंग, बैंक्स, NBFCs दे विल प्रोवाइड क्रेडिट अगेंस्ट टोकनाइज्ड इनवॉइसेस. तो ये जो इनवॉइसेस हैं, इन इनवॉइसेस को टोकनाइज किया जाएगा और उन्हीं टोकनाइज इनवॉइसेस के बदले में बैंक्स, NBFC जो है वो लोन प्रोवाइड करेंगे. दैट इज द बेस्ट पार्ट. इसमें अगर हम बात करें, इट विल रिजल्ट इन चीपर, फास्टर, कोलेटरल फ्री फाइनेंस, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट. Exit decision में successfully tested under the sandbox condition, eligible for adoption by regulated entities subject to RBI approval. तो अब RBI से अप्रूवल मिलते ही ये जो एग्जिट हुआ सक्सेसफुली, इंडियन बैंक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इट विल बी इंप्लीमेंटिंग इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट टू मेक सिचुएशन बेटर फॉर द MSMEs. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. The fifth cohort allowed only fintech applications related to MSME lending and retail payments. नहीं सर, न्यूट्रल का मतलब ही ये है कि कोई थीम नहीं है, आप जो चाहें जैसा चाहें आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं. ऑन टैप फैसिलिटी permits submission of application for previously closed cohort themes. That is true. IBDIC Private Limited blockchain based solution enables tier 2 and tier 3 MSMEs to access financing or access finance using tokenized invoices. That is true. Exit from sandbox का मतलब है immediate adoption. No sir, this is wrong. You will not be allowed to adopt it immediately. You need approval from the concerned or respective regulated entity or regulator. Invoice tokenization involves converting accepted invoices into a secure digital tokens on blockchain for financing purpose. That is absolutely correct. तो आंसर क्या बनेगा? 2, 3, 5 are correct. So B option is the correct answer for the given question. अगला देखो, अगला पॉइंट है रिलेटेड टू RBI नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी. अगर मैं RBI के नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी की बात करूं, so it is effective from it will be effective from 1st of April 2026, which allows all the new and renewed non-fund based credit facilities or non-fund based facilities must comply these norms. Beneficiary कौन है सर? The entity whose favor the NFB is issued. तो जिसके फेवर में आपने गारंटी दी है, जिसको गारंटी दी है वो बेनिफिशियरी हो गया. ऑब्लिगर पार्टी whose obligation is backed by NFB. गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है. को एक्सेप्टेंस का मतलब है रेगुलेटेड एंटिटी अंडरटेक्स टू पे सेलर इफ बायर डिफॉल्ट्स. अगला है सिक्योर्ड पोर्शन, पार्ट ऑफ NFB दैट इज नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी बैक्ड बाय टेंजिबल सिक्योरिटी और कोलैटरल. अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले जनरल कंडीशन. जनरल कंडीशन क्या कहती है? रेगुलेटेड एंटिटीज मस्ट डिफाइन क्रेडिट पॉलिसी कवरिंग नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी टाइप्स, लिमिट्स, अप्रेजल्स, monitoring, fraud prevention, delegation as well as audit. Funded tie-in rule, that means NFBs generally issued only if obligor has funded facility with regulated entity with exceptions such as derivatives. What is this PCE? बहुत important है, बताना जरा. Counter guarantee, fully collateralized or NOC based issuance. NFBs cannot guarantee public deposits or bonds unless RBI permits. If NFB devolves into funded exposure, standard funded asset norms apply. देख लो एक बार, पर मुझे ये बता दो PCE का क्या मतलब है? What is this PCE? Partial credit enhancement. That is correct. And this facility will be provided by NBFC. Rest all the facilities will be provided by bank as well. Banks only, but NBFCs will be involving bank in only one category, that is PCE. ठीक है. अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट कहता है पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट की बात करें तो एलिजिबल प्रोवाइडर्स आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग RRBs, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड इवन वी इंक्लूड NBFCs as well as HFCs. Eligible bonds, corporate or special purpose vehicle bonds. NBFC bond size, that asset should be greater than or equals to NBFC bonds if the asset size of the NBFC is greater than or equals to 1000 crore, as well as municipal bonds are also included. Mechanism क्या है सर? Subordinated है. Irrevocable contingent line drawn if the cash flow shortfall occurs, improves the rating. मतलब क्या है? तो सर इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आपने कहा that you will be issuing
the 1,000 crores ऑफ सिक्योरिटीज, और ये जो 1,000 crore सिक्योरिटीज है उसको पार्शली क्रेडिट एनहांसमेंट कर दिया एनबीएफसी में, तो पब्लिक में ये हो गया कि यार 20% तो ऑलरेडी एनहांस्ड है बाय द एनबीएफसी, तो 80% ही लॉस है या 80% ही रिस्क है, 20% इस तो कवर है ही, सो दिस विल improve the trust of the public towards these instruments. कैपिटल ट्रीटमेंट, अगर मैं कवरेज की बात करूं, पार्शियल सपोर्ट 20 to 50% ऑफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, लिमिट्स क्या है, पर रेगुलेटेड एंटिटी अप टू 50% ऑफ द बॉन्ड्स, ऑल रेगुलेटेड एंटिटी कंबाइंड अगेन अप टू 50% ऑफ द इशूड बॉन्ड्स. कैपिटल ट्रीटमेंट, ड्रॉन पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट इज इक्वल्स टू बैलेंस शीट एडवांस, अनड्रॉन विल बी नॉन बैलेंस शीट एडवांसेस. जो पैसा आपने दे दिया ऑब्वियसली वहां पे फंड फ्लो हुआ तो वो बैलेंस शीट में आएगा, जब पैसा दिया नहीं, सिर्फ जुबान दी है, सिर्फ गारंटी दी है, उसमें दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन बैलेंस शीट एक्सपोजर. प्री इनहांस रेटिंग, मेंटेन कैपिटल इफ रेटिंग इज BBB नेगेटिव. तो आपकी जो रेटिंग है दैट शुड बी मोर देन BBB नेगेटिव. अगर उससे कम होगी रेटिंग देन इट विल बी अ टफ सिनेरियो. एनपीए वाटरफॉल लॉजिक, पीसी ड्रॉन ट्रेंच ग्रेटर देन 90 days ओवरड्यू क्लासीफाई एज एनपीए. तो अगर आपका पीसी ड्रॉन हुआ है फॉर 90 days से ज्यादा और ओवरड्यू हो गया तो उस केस में उसे क्लासीफाई किया जाएगा एज एनपीए. एनबीएफसीज या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के जो बॉन्ड्स हैं उनका टेन्योर होना चाहिए ग्रेटर देन 3 years. प्रोसीड्स फॉर डेट रीफाइनेंसिंग, एक्सपोजर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1% ऑफ पीसीई प्रोवाइडर्स कैपिटल. तो जो आपकी एक्सपोजर है दैट शुड बी अप टू 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल. तो आपका जो पीसी एक्सपोजर है दैट शुड बी अप टू 1% ऑफ द टोटल कैपिटल इन केस ऑफ बॉन्ड्स इशूड बाय एनबीएफसीज और एचएफसीज. क्लियर होगी बात आई गेस, बाकी सब ठीक है. क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, आंसर आ जाएगा. नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी कैन बी इशूड फ्रीली टू गारंटी रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स विदाउट आरबीआई अप्रूवल. विदाउट आरबीआई अप्रूवल केस में आरबीआई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है सर. नॉन फंड बेस्ड credit facility cannot guarantee public deposits or bonds. They cannot guarantee public deposit or bonds until and unless it is expressly permitted by RBI. So this is wrong. They are not freely allowed. Guarantee issued by urban cooperative bank must not exceed 5% of the total asset. So small finance bank, urban cooperative banks, I would say small banks, urban cooperative banks, RRBs, local area banks, state cooperative banks, central cooperative banks, they must adhere to the ceilings. Total guarantee in case of urban cooperative banks, state cooperative banks, central cooperative banks, RRBs, as well as local area banks cannot exceed 5% of the total asset, and unsecured guarantee should not exceed 1.25%. This is true. Partial credit enhancement can be extended to bonds of NBFCs with asset size greater than 1,000 crore with coverage up to 50%. That is correct. कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड टू वर्ड हमने पढ़ा था. Drawn partial credit enhancement amount are treated as on balance sheet advances while the undrawn are treated as contingent liabilities. That is true. Electronic bank guarantee issuance requires manual intervention at each stage for audit process to ensure accountability. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है. E-bank guarantees, SOPs aim to minimize the manual intervention. It ensures the platform integration as well as audit trail. So that is not required. So answer is going to be 2, 3, 4. B option is the correct answer. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Moving on to the next one. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? SEBI has extended the timeline for margin pledge as well as repledge framework implementation. क्या है? So you are a customer, ठीक है? You have your securities. And if you want to trade, and in order to achieve a margin limit or a margin value so that you can trade on the stock exchanges, what you do is, आप अपने स्टॉक ब्रोकर के पास क्या करते थे? अपने सिक्योरिटीज को प्लेज करते थे. अब जैसे ही आपने अपनी सिक्योरिटीज को प्लेज किया विद द स्टॉक ब्रोकर्स क्या करते थे? दे स्टार्टेड यूजिंग दीज सिक्योरिटीज फॉर देयर ओन बेनिफिट. फॉर देयर ओन बेनिफिट. अब इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए देयर हैज बीन अ न्यू सिचुएशन व्हिच सेज दैट
individual will be holding its securities in its respective demat account only, और उस respective demat account पे we will mark the word pledged, और repledge. Pledge और repledge का मतलब ये हुआ कि सर आपकी सिक्योरिटी जो की है that is pledged with the stock broker, against which stock broker has given you the limit to participate on the stock exchange, but the security will still remain in the demat account only. It will remain with the depository only, so that the misuse which was earlier done by the stock brokers should not be done in the near future. तो ये एक थॉट था. अब उस पर क्या बातें हुई हैं सुनना ध्यान से. रिवाइज इंप्लीमेंटेशन डेट 10th of October 2025, पहले आया था 1st अक्टूबर में. लीगल बेसिस क्या है सर, पहले डेट थी कि 1 सितंबर से इंप्लीमेंट होगा, लेकिन अब इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स 10th of October 2025. सेबी सर्कुलर इशूड अंडर सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट 1992 एंड सेबी stock broker regulation 1992. What is the purpose? Ensure investor securities used for margin obligations remain under client ownership, reduce risk of misuse by the brokers and enhance market stability, increase transparency and create auditable trail of margin transactions. तो क्या होगा अब? पहला, exclusive depository use. Exclusive depository use का मतलब क्या? All the margin obligations in equities as well as derivatives must be through NSDL or CDSL pledge. That means depository के through ही pledge या repledge system होगा. Broker will no longer hold the client securities directly. Second, automated invocation. Pledge securities automatically blocked for early pay-in within the client demat account when invoked. तो जब भी आप यूज करेंगे कोई ट्रांजेक्शन के लिए तो ऑटोमेटिकली वो प्लेज अप्लाई हो जाएगा ऑन योर सिक्योरिटीज. Pledge release for pain. Upon the pledge release, pain block is automatically created in the client's account. Eliminate manual unpledge instructions. तो भैया अब यहाँ पर मैनुअली कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली सारी चीजों को मैनेज किया जाएगा. अब इसमें टेक्नोलॉजी इनेबल करनी होगी by the depositories to ensure straight through processing with minimum human intervention. Investor protection ownership remains with the client. System ensures automatic validation and audit trail of all margin related transfer. इसका क्या significance है? पहला, investors enhance protection of securities, no misuse by brokers. Market stability, it will reduce risk of broker default and settlement failure. Third is regulatory oversight. It should be automated, auditable trail, which will help SEBI in supervision. And broker के केस में operational challenges होंगे initially, but it will ensure smoother compliance and it will reduce the dispute which is going on between the broker as well as the client. ठीक है जी, क्लियर हो गई कहानी. तो अब जो आपके न्यू फ्रेमवर्क है that will allow the brokers to hold client security directly for margin purpose. No sir, ये तो है ही नहीं ना. अब आपके जो brokers हैं they cannot hold these securities directly, rather these securities will be deposited or these securities will remain in the depositories, in the demat accounts, but उन पे pledge या repledge लग जाएगा. That is a point. All margin obligation in equities and derivatives must be fulfilled exclusively through depository pledge and repledge system. That is true. Early pay-in of securities is automatically blocked in client's demat account when invoked for margin. इसका मतलब समझो. इसका मतलब क्या है कि सर invocation triggers automated early pay-in block in client's account. ये याद रखना. अगला पॉइंट आता है, upon pledge release, the pay-in block is automatically created in the client's demat account without manual instruction. SEBI issued the circular under power of sections 11 as well as SEBI stock regulation 1992. So that is also true. So answer to this particular question is B option. समझ आ गई ना बात? अरे कहानी समझ आ गई कि पहले जो आप ब्रोकर के पास अपनी सिक्योरिटी रखकर उसे सिक्योरिटी देते थे फॉर अ मार्जिन और उसी मार्जिन की मदद से यू यूज टू ट्रेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. नाउ दैट विल बी डन, बट दैट विल बी डन थ्रू द डिपॉजिटरीज. योर सिक्योरिटीज विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रोकर. जो कि वो मिसयूज हो रहा था, वो मिसयूज अब नहीं होगा. जो पहले मिसयूज हो रहा था आपकी सिक्योरिटीज का बाय द ब्रोकर्स, दैट विल नॉट बी डन इन द नियर फ्यूचर. अगला पॉइंट है सेबी इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ इंडेक्स ऑप्शन पोजीशन. इसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज, नेट इंट्राडे पोजीशन लिमिट कितनी है? सो दैट इज 1500 करोड़ से बढ़ाकर
अब इस नेट इंट्राडे पोजीशन को कितना कर दिया सर, इट इज 5000 करोड़ पर एंटिटी। ग्रॉस इंट्राडे लिमिट आज भी कितना है सर, ग्रॉस इंट्राडे लिमिट आज भी कितना है 10,000 करोड़। नेट का मतलब सर, नेट का मतलब है व्हेन यू सब्ट्रैक्ट लॉन्ग सॉरी शॉर्ट फ्रॉम लॉन्ग, दैट इज नेट। बट अगर आप नेट और लॉन्ग और शॉर्ट को इंक्लूड करके चलते हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस द लिमिट इज 10,000 crores. So this 10,000 crore limit is basically on what? So this is basically SEBI has introduced the new framework for intraday monitoring of index option position to enhance transparency and strengthen risk management. इसमें जो पहला है इंट्राडे मॉनिटरिंग नॉर्म्स, वो 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट हुआ है, और जो पेनल्टी नॉर्म्स है दैट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 6 दिसंबर। इसमें 4 स्नैपशॉट्स मैंडेटरी हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज को लेने होंगे, और उनमें से एक स्नैपशॉट मैंडेटरी है, दैट इज 2:45 to 3:30 PM। पेनल्टीज विल बी एक्सपायरी डे ब्रीचेस अट्रैक्ट मार्जिन टॉप अप और एडिशनल सर्वेलेंस डिपॉजिट। या तो अगर आपका एक्सपायरी डे हो जाता तो उस केस में आप अट्रैक्ट करेंगे या तो मार्जिन टॉप अप या फिर आपको एडिशनल सर्वेलेंस डिपॉजिट देना होगा। स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस दे शुड सबमिट the standard of procedures with SEBI within 15 days so that it can be communicated to all the participants. Implication traders और brokers के ऊपर अगर हम बात करें, need to continuously monitor the intraday exposure especially for high frequency trading and proprietary desk. Exchanges या market infrastructure institution must enhance real time surveillance. Market की बात करें, framework strengthen the governance, reduce systematic risk, and it will align India with the international best practices. Question solve करके देखते हैं। Which of the following statement regarding the SEBI's intraday monitoring framework for index option are correct? First one, net intraday position limit per entity increased to 5,000 crores on future equivalent basis. That is true. On future equivalent basis, that is true. Gross intraday limit is 10,000. Sorry, it's 10,000 crores, not 12,000 crores. So the second statement is wrong. Moving on to the third one, at least 4 random intraday position snapshot, जहां पे हम चेक करेंगे कि कितनी कितनी वैल्यू होल्डिंग है, और उसमें भी एक स्नैपशॉट मैंडेटरी है 2:45 to 3:30. Penalty for expiry day breaches including margin top up or additional surveillance deposit will be charged from 6 December 2025 onwards. That is true. Exchanges and clearing corporation must prepare and submit SOP within 15 days. That is also correct. So answer is going to be 1, 2, 4, 5. B option is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखो, सेबी के दो और इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं। एक है सेबी का इंपॉर्टेंट सर्कुलर दैट इज PSU डीलिस्टिंग, और दूसरा है सेबी का सर्कुलर रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स। मैं शायद आपको कल ही बोल रहा था कि जिस दिन सेबी की नोटिफिकेशन आएगी, मैं सेबी के सर्कुलर्स भी आपको बहुत डिटेल में करवाऊंगा, क्योंकि सेबी के एग्जामिनेशन में मेजॉरिटी क्वेश्चन सेबी के सर्कुलर से ही आते हैं। इन पेपर 1 एंड इवन पेपर 2 में भी आपके सेबी सर्कुलर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज ही सेबी ने मेरी बात सुन ली शायद, तो सेबी का ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो डोंट वरी, सर्कुलर will be on house, so I will be taking the full guarantee of your SEBI circulars and I will be completing them over the period of time, so that जैसे मैंने आपको RBI circulars के लिए रेडी किया, in a same manner I will try my level best कि मैं आपको रेडी करूं for the SEBI circulars as well. पहले पॉइंट पे बढ़ते हैं। पहला first point is PSU delisting norms. Only the public sector units with government holding greater than 90% equity, excluding banks, NBFCs and insurance companies. Mechanism is reverse book building replaced by fixed price method. Reverse book building की जगह इस बार जो आप issuing करेंगे अपने shares की, that will be through fixed price method. Exit price should be greater than or equals to 15% above floor price. Floor price calculation कैसा होगा? So floor price calculation will be either, what is VWAP? What is this VWAP? Any idea guys? सुनी सुनाई बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया भी था। VWAP, it stands for what? It stands for volume weighted average price. So the volume weighted average price of last 52 weeks or
मैक्सिमम प्राइस पेड इन लास्ट 26 वीक्स, उनमें से जो भी हायर होगा दैट विल बी योर फ्लोर प्राइस सर्कुलेशन. Exit window and settlement, shareholders they will get a 1 year exit window. They will get a 1 year exit window. Unpaid money deposited with the exchanges for 7 years. जो unpaid money है that will be deposited with the exchanges for 7 years. तो क्या हुआ कि सर मान लो मैं PSU मैं अपने शेयर्स वापस खरीद रहा हूँ फ्रॉम द पब्लिक, देन आई विल बी डिसाइडिंग फ्लोर प्राइस प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू 15% ऑफ फ्लोर प्राइस. इस प्राइस को मैं ऑफर करूंगा तब जाकर शेयर वापस खरीदूंगा. फ्लोर प्राइस इसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा और आई विल बी कमिंग अप विद द परचेज. 30 डेज का विंडो दिया जाएगा. उस 30 डेज के अंदर अंदर आई विल ट्राई टू परचेज इट. अदरवाइज यू हैव 1 year एग्जिट विंडो. उस 1 साल की विंडो में आप एग्जिट कर सकते हैं. और अगर आपने 1 साल की विंडो में एग्जिट नहीं किया देन द अनपेड मनी विल बी डिपॉजिटेड विद द एक्सचेंजेस फॉर 7 years. तो जो आपका अनपेड मनी है, जो आप पे नहीं कर पाए, जो आप नहीं हैंड ओवर कर पाए टू द पब्लिक, दैट विल रिमेन विद एक्सचेंजेस फॉर 7 years. उसके बाद इट विल बी टर्म्ड एज अनक्लेम्ड शेयर और उस अनक्लेम्ड शेयर्स को या अनक्लेम्ड फंड्स को इट विल बी ट्रांसफर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स. Shareholder approval, relaxation in the approval threshold. Earlier requirement of 2/3 public shareholder consent, उसे अब क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया. What is the minimum investment? Sir, in case of infrastructure investment trust norms, minimum जो investment थी that has been cut to 25 lakhs. That has been cut to 25 lakhs for primary market in most of the cases. In some cases it is still 1 crore of criteria. Now in the primary market as well as in the secondary market, both the minimum investment which can be done through infrastructure investment funds is 25 lakhs. Public category definition, related parties even if QIBs excluded from the public category. अगर आप एक qualified institutional buyer and if you are involved in that particular case, you will be excluded from the public category. That has been given. Cash flow flexibility. कैश फ्लो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जस्ट नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज बिफोर पासिंग इट टू द इनवाइटीज. दैट इज इंपॉर्टेंट. इम्प्लीकेशंस क्या है सर? इट विल सपोर्ट गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वाया PSU, स्ट्रेंथन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फाइनेंसिंग थ्रू infrastructure financing through the infrastructure investment trust funds. It will improve market depth, lower entry barriers, as well as it will enhance the investors' participation. So the question is now on your screen. The question says, first statement, PSU delisting reforms apply to all listed companies with at least 90% of equity with the government, not 50%. Fixed price exit for PSU must be at least 15% above the floor price. That is true. Floor price for PSU delisting is the higher of volume, is the higher of volume weighted average price of last 52 weeks or maximum price paid in the last 26 weeks. That is true. Minimum primary market investment is reduced to 25 lakhs. That is true. Related parties are included in public category for invitees under the new norms. Related parties are included under the category of invitees under the new norms. I would say related parties, even if it is a qualified institutional buyer, they are excluded from the public category for the infrastructure investment trust funds. So this is wrong. Answer is going to be 2, 3, 4. So A option is going to be the correct answer. ठीक है जी, क्लियर हो गया, मजा आया. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? RBI ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है. ज्यादा इसमें दिमाग चलाएंगे नहीं. पहला पॉइंट है, नई वेबसाइट का नाम indiancurrency.rbi.org.in. पुरानी वेबसाइट का नाम पैसा बोलता है .rbi.org.in. इसमें 360 डिग्री बैंक नोट व्यू मिलेगा. इट हैज अ डिजाइन एंड सिक्योरिटी फीचर्स. मल्टीमीडिया रिसोर्सेज है, वीडियो, ऑडियो क्लिप्स, एनिमेशंस फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेसिबल फॉर रूरल एंड विजुअली impaired users. It provides interactive games which will help you to learn more about the notes. बैंक नोट एक्सचेंज गाइडेंस भी गिवन है, कब एक्सचेंज होगा, कहाँ होगा, क्या न्यू क्लीन नोट पॉलिसी है, व्हाट विल बी द एक्सचेंज वैल्यू इन केस ऑफ टीयर्ड नोट, in case of soiled node, in case of mutilated node, every instruction will be given. So these are the features. RBI, as per the RBI annual reports, 14% year-on-year decline has been witnessed in case of counterfeit notes. This is very important. ये पॉइंट याद रखना, मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द न्यू माइक्रोसाइट
URL is पैसा बोलता है नहीं सर, ये तो पुराना वाला है, नया वाला is indiancurrency.rbi.org.in. It provides 360-degree virtual view of banknotes for authenticity checks. That is true. Multimedia resources include video and audio clips accessible for visually impaired users as well. True. Microsite includes guidance on RBI's clean note policy, exchanging mutilated notes. True. According to RBI, counterfeit notes they have been decreased 14% on year basis. So answer is going to be A option. 2, 3, 4 are correct. Got it guys? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, related to the RBI payment aggregator. If I talk about what is payment aggregator, guys, you are a buyer, you want to purchase a product from Flipkart. You are a buyer, you want to purchase a product from a vegetable seller. You are a buyer, you want to purchase a product from, let's say, Maruti Suzuki. ठीक है, तो ये एक organized showroom हो गया. This is an unorganized, I would say, the hawker who is standing outside your house, and this is a marketplace. In all these cases, you can pay over here, you can pay physically. Over here also you can pay physically, which means you can pay through cash. But in case of Flipkart, you cannot pay through cash. So in that particular case, we need a mediator. We call it as payment aggregator, which will provide you with a platform where you can choose your payment method, either UPI or maybe Aadhaar enabled payment system, or maybe card payment system, or maybe whatever others which are available. अब इससे होगा क्या सर, जैसे ये फंड्स आपने पे किए, यू आर एक्चुअली पेइंग द फंड्स टू द पेमेंट एग्रीगेटर. Payment aggregator will receive those funds, and those funds will be credited into the escrow account, and this escrow account is maintained by the payment aggregator. अब ये जो पेमेंट एग्रीगेटर है, इसके अकाउंट में पब्लिक का पैसा या बायर का पैसा, कस्टमर का पैसा क्रेडिट होगा, एंड लेटर ऑन दीज फंड्स विल बी क्रेडिटेड इनटू द मर्चेंट्स अकाउंट, फिर चाहे वो मारुति सुजुकी है, वेजिटेबल सेलर है, या फिर वो फ्लिपकार्ट है. तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है, पार्टी विच प्रोवाइड्स यू द ब्रिज, विच एक्ट एज अ ब्रिज between the buyer as well as seller, through which the payment is received, through which the different modes are available for making the payment, for receiving the payment. That services are provided none other than by the payment aggregator. These guidelines were issued back in September 2025. Purpose की अगर मैं बात करूं, consolidates fragmented rules for the payment aggregator, including payment aggregator physical. Physical का मतलब है when POS is available. जब आप गए, let's say you went to the फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप पे गए, वहां पे आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और आपने कार्ड दिया, फिजिकल कार्ड प्रेजेंट था, फिजिकल मशीन पे उस कार्ड को स्वाइप किया गया, पेमेंट हुई. दिस इज पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल, जिसने वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रोवाइड की है. देन वी हैव पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन, जो कि आप फ्लिपकार्ट के लिए यूज करते हैं. पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, जब आप आउटसाइड इंडिया पे करते हैं थ्रू अ पेमेंट एग्रीगेटर. अगर आपको याद हो, रिसेंटली हमने एक न्यूज आज ही पढ़ी थी, पेपाल ग्लोबल. सो पेपाल ग्लोबल हैज बीन लॉन्च, which will act as a PayPal Global has been launched, which will act as a interoperable wallet, and it will allow the payment on the international level as well. Directly from your UPI, you can make the payment for the international transactions as well in the near future. This has been announced. Coming back to the news. Payment aggregator collects customer payment on the behalf of merchant. Payment aggregator physical, point of sale machine. Payment aggregator online transaction via app or website. Payment aggregator cross-border transaction, inward, foreign individual or foreign resident is paying to Indian merchant, outward is Indian resident paying to the foreign merchant. Both the transactions will be recorded explicitly in different accounts. There will be a different account for inward, there will be a different account for outward, and there will be no netting in these transactions calculation. Gateway is the only technology provider, does not hold funds. Escrow account, segregated account for holding customer funds. Core portion earns interest. What is this core portion? Any idea? मैंने आपको लास्ट बार बताया भी था, कोर पोर्शन को मैंने डिफाइन भी किया था, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कोर पोर्शन. कमिंग टू द नेक्स्ट, ऑथराइजेशन एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट. बैंक्स कैन ऑपरेट पेमेंट एग्रीगेटर्स विदाउट सेपरेट RBI approval. Non-bank entities, they require RBI authorization.
NOC is also needed if they are regulated by any other regulated entity. NOC means no objection certificate. Net worth is going to, it's need to be 15 crores initially. It should be 25 crores within 3 years. It should be 25 crores within 3 years. Governance की बात करें, fit and proper criteria for promoters, directors, RBI approval required for ownership management changes, dispute management grievance redressal officer is need to be appointed, refunds, chargebacks, escalation matrix mandatory, which is need to be set up, security and risk management, compliance for payment aggregators and merchant systems, annual cyber security audits, very important, annual cyber security audits, data localization, all payment data should be stored in India, general directions, no marketplaces, they are not allowed to open marketplaces, MDR, merchant discount rate compliance, refund to original mode, that means if there is a refund, it will be credited into the original mode of payment. No CNP PIN is required, that means no card present, or no card not present PIN, that is a 2-factor mandatory which we have discussed. अगला है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, सेपरेट अकाउंट फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड, नो नेटिंग ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो विल बी ट्रीटेड सेपरेटली, ट्रांजेक्शन कैप इज 25 लाख रुपीज पर ट्रांजेक्शन. इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर रूल्स, KYC फुल फॉर मर्चेंट, सिंप्लीफाइड फॉर स्मॉल मर्चेंट्स. तो आपका फुल KYC होगा मर्चेंट्स के लिए, सिंप्लीफाइड KYC होगा फॉर द स्मॉल मर्चेंट. स्मॉल मर्चेंट्स कौन होते हैं? सो स्मॉल मर्चेंट्स maximum amount maintained नहीं, एवरेज बैलेंस ऑफ द फंड्स टू बी केप्ट नहीं, दोनों ही करेक्ट नहीं हो, दोनों ही एग्जैक्टली करेक्ट नहीं हो. अनुज एंड अनंत, प्लीज रीड इट अगेन, प्लीज रिकॉल इट अगेन एंड गिव मी द आंसर. स्मॉल मर्चेंट वो है जिसका डोमेस्टिक टर्नओवर लेस देन 40 लाख है या एक्सपोर्ट्स उसके लेस देन 5 लाख है, दे आर द स्मॉल मर्चेंट्स. उनके केस में सिंप्लीफाइड KYC किया जाएगा. Average of the lowest daily outstanding balance held in the account for 26 fortnight period, that is absolutely correct, Ami. Next is escrow and settlements, fund segregated from payment aggregator own account, only core portion will earn the interest, permitted debits, merchant settlements, refunds, payment aggregator commissions, third party transfer with instructions, settlement timelines must be fair and transparent. ठीक है जी, this is all you need to remember. अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं कैसा आएगा. पहला, नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर रिक्वायर authorization, that is RBI's authorization, and net worth of 25 crores immediately upon launch? No, sir. At the time of registration, it should be 15 crores. In next 3 years, it should be 25 crores. All cross-border payments by payment aggregators must be netted off to reduce settlement risk. Must be netted off to reduce settlement risk. Is it true? Is it true? What will be the answer? So that is incorrect. All the cross-border payments, they cannot be netted off. Inflow and outflow, they are settled separately. No netting off can be done. Payment aggregator physical refers to the physical point of sale transaction, while payment aggregator online refers to the online transactions. True. All payment data must be stored within India to comply with the data localization. True. Escrow accounts allow entire balance to earn interest. No, sir. Interest is not earned by the entire balance. Only and only the average of the lowest daily outstanding balance held in the account for over 26 fortnights will attract interest. That is the core balance. So answer is going to be 3 and 4 statement only. Agla. RBI regulatory review and framework and formulation framework. तो formulation framework में सबसे पहली कहानी तो वही है कि सर अगर आप कोई भी अमेंडमेंट लाएंगे, कोई भी नई पॉलिसी लाएंगे, कोई भी नया चेंज लाएंगे, कोई भी नई master direction, whatever it is, the first step is you will be coming up with the draft. Then you will wait for 21 days, public and stakeholders feedback, minimum 21 days. उसके बाद feedback को you will be taking into account. If required, major changes, come up with the draft again. Otherwise, include the feedback before inclusion. Do the analytical analysis is required. Once it is done, then you will be coming up with the final guidelines. लेकिन अब हो क्या रहा है सर, RBI में रोज कोई ना कोई नई मास्टर डायरेक्शन आ रही है, जो आप और मैं हम दोनों फंस रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना और मुझे एग्जाम क्लियर करवाना है. लेकिन अब ये प्रॉब्लम RBI को भी फेस हो रही है. RBI कह रहा है दुनिया भर की रेगुलेशंस आ रही है, बहुत सारी ऐसी रेगुलेशंस है जो कि एक दूसरे की डुप्लीकेट है.
बहुत सारी ऐसी रेगुलेशन है जो अब आउटडेट हो चुकी हैं, तो आरबीआई ने कहा कि अब हम एक प्रोसेस सेट करते हैं. द प्रोसेस विल बी, देयर विल बी अ रेगुलेटरी रिव्यू सेल, और ये जो रेगुलेटरी रिव्यू सेल है, इट विल बी रिव्यूइंग ऑल द रेगुलेशंस ऑन अ स्पैन ऑफ 5 to 7 years. और ये जो भी रिव्यू होगा, उस रिव्यू में अगर कोई उन्हें एडवाइस चाहिए, दैट कैन बी टेकन अप फ्रॉम द एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन. सो दिस हैज बीन अनाउंस्ड. So effective from 1st October 2025, conduct periodic review of RBI regulations every 5 to 7 years, evaluate relevance, enforce experience, industry feedback, coordinate with the advisory group on regulation. What is advisory group on regulation? So this is the external experts from banking, insurance, finance sector, provide continuous feedback to RBI. Tenure is 3 years, renewable by 2 years, can co-opt additional members for subject matter expertise as well. Now my question is, guys, who is the current chairman of AGR? Who is the current chairman of AGR? Give me the answer in the comment section. बाकी ये सारी कहानी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस पे कोई बात करने की जरूरत है ही नहीं. दिस इज द सेम. तो मुझे बताओ जरा, AGR हैज बीन अपॉइंटेड ना, एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन हैज बीन अपॉइंटेड. उसका हेड कौन है? Any idea? No idea? बोलो, नहीं पता हो तो एन टाइप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूंगा. चलो मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं. द स्ट्रक्चर विल इंक्लूड दैट इट विल हैव द एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स with flexibility to include more specialist as needed. It is chaired by, if I'm not wrong, Rana Ashutosh Kumar Singh, Managing Director of SBI. Absolutely correct. बहुत बढ़िया अम्मी, you are doing very well. पिछली कुछ क्लासेस से मैं नोट कर रहा हूँ, you are doing really very well. So wish you luck. उम्मीद है कि आने वाले एग्जामिनेशन में you are going to score wonders. So Rana Ashutosh Kumar Singh, the Managing Director of SBI, is the chairperson. Initially, the panel will be operating for tenure of 3 years and possibly it will get an extension of 2 years. ठीक है जी. इसके अलावा और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, मुझे तो नाम याद नहीं है, आप याद करना चाहो कर लेना, पूछेगा कोई नहीं. ठीक है. मूविंग बैक टू द क्वेश्चन देखते हैं क्या है. क्वेश्चन क्या कहता है? द रेगुलेटरी रिव्यू सेल reviews all RBI regulations every 3 years. It will review all RBI regulations every 5 to 7 years. Advisory group on regulation can co-opt additional members for subject expertise. That is true. Public consultation on draft regulations require a minimum 21 days for comments. That is true. Urgent systematic risk concerns can override the public consultation concern or process. That is true. Non-adherence to framework invalidates previously issued RBI. No sir, जो पहले issue हो गए, they are still implemented, they are still accepted, there is no issue with them, but from now onwards these processes or these steps are need to be followed. So keeping that in mind, 2, 3, 4 are correct. So keeping that in mind, A option is the correct answer. ठीक है जी, क्लियर हो गया. आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो. इंटरऑपरेटेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. इंटरऑपरेटेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब सर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि आरबीआई के रेगुलेशन में भी हैं. दे आर अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेबी और दे आर ऑल्सो अंडर द रेगुलेशन ऑफ IRDAI और मे बी दे आर ऑल्सो दी अंडर द रेगुलेशन ऑफ PFRDA. तो इन सिनेरियोज में क्या किया जाए कि अगर उस प्रोडक्ट को आपको फाइनल करना है, देन यू हैव टू गो विद द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोसेस. And if you want to run the regulatory sandbox process, you cannot do it alone because you are not the alone or you are not the only regulated entity which is going to manage its operations in the near future. तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला गया था. ये कोई नया नहीं है, पुराना ही है, पहले ही सॉल्यूशन निकाल दिया गया था. वो सॉल्यूशन क्या निकाला गया था? वो सॉल्यूशन ये था कि सर हम एक बनाएंगे इंटरऑपरेटेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, और इस इंटरऑपरेटेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में we will be coming up or we will be initiating the process of live test or testing the products or applications live. But इसमें we will be deciding that which organization or which regulator is going to be the primary regulator, and primary regulator is going to be the one जिसके majority norms implement होंगे. For example, I am
डेवलपिंग एन ऐप जिसमें मेरा मेजर फंक्शन है लोन देने का, लेकिन उसके साथ साथ आई विल बी प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस सर्विस ऑल्सो. सो इन दैट पर्टिकुलर केस इफ मेजॉरिटी norms belong to RBI, so RBI in that particular case will become the principal regulator and IRDAI will become the secondary regulator. Got it? Is this point clear? तो ये स्टोरी है, स्टोरी को अब डिटेल में समझते हैं क्या है. A controlled testing environment where innovators trial financial products, services with real user under the regulatory supervision may include temporary relaxation for testing purposes. Purpose है to enable cross-sector financial innovation to be tested under multiple regulators through a single window system, avoids the need to approach each regulator separately. Genesis में it is developed by IRTG FinTech and which is under FSDC subcommittee. Key participants RBI, SEBI, IRDAI, PFRD, IFSCA, Ministry of Finance as well as Ministry of Information, Ministry of Electronics and Information Technology. ठीक है जी. उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ, key regulators and the roles: RBI for bank and payment, SEBI for security market, IRDAI for insurance, IFSCA for IFSC products, PFRDA for associate regulators. Eligibility: fintech, banks, NBFCs, insurers सबके लिए implemented है. Determined by principal regulator is based on the dominant feature of the product. Product service suitable: digital payment combined with insurance, cross-border payments, wealth tech combining securities and pensions, InsurTech bundled with banking or payments or some other tech related payments which can be done. So one we have the principal regulator, other we have the secondary or the associate regulator. Application, single application will be submitted to RBI FinTech department. No fees unless the primary regulator specifies it. Testing duration will be typically 6 to 9 months. Post testing, formal approval is required from the regulator, that is your primary regulator or principal regulator, before you are going commercially. That is a point. What are the benefits? So benefits बड़े simple है. Controlled and low risk testing environment मिलेगा, single window engagement मिलेगी, cross regulatory guidance reduce the compliance complexity and it will accelerate time to market for innovators. Simple है. अब ये क्यों था न्यूज में? सर इसके जो frequently asked questions है ना, they were revised. जो कुछ frequently asked questions RBI publish करता अपनी वेबसाइट पे, the questions which are published by RBI on its website, we call it as frequently asked questions. तो उनमें कुछ revision था तो इस वजह से ये न्यूज में था. That is the reason I have included it. But if I ask you, these interoperable regulated sandbox was launched in which year? पहले तो मुझे ये बताओ, was launched in which year? Was launched in which year? Any idea? पढ़ाया था मैंने, इसलिए पूछ रहा हूं. 2022. What about others? बस कोई और नहीं है. ठीक है. It's October 2022. It was in October 2022. It was in October 2022. Remember that. Chalo, coming back to the question. IORS allows innovators to test financial products under a single regulator only? No. Principal regulator is determined by the product's dominant feature. True. Testing duration is 6 to 9 months. True. PFRDA act as principal regulator for pension linked products. PFRDA will act as principal regulator for pension related products. याद रखना सर, ये जो PFRDA है ना, it is always and always an associate regulator. It cannot act as a principal regulator. ये point याद रखिएगा. Next is post testing. Formal approvals from all the relevant regulators are required before commercial launch. That is true. So answer is going to be A option. 2, 3, 5 are correct. Clear हो गया जी? समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. What does the next question says? Participation of
stand alone primary dealers in the non-deliverable rupee derivative market. I hope आप सबको पता है what is non-deliverable rupee derivative contract. You all know that. What is it, sir? It is basically a derivative. It is basically a contract which is signed in order to hedge your INR settlement. So it basically enable hedging in Indian rupees without physical delivery or settlement in the foreign currency. नहीं पता तो मैं बता दूं, जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से, फिर क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनेशन में कहीं गलत मत कर देना. नॉन डिलीवरेबल rupee derivative contracts. If someone asks me this question, I would be coming up with this answer in this manner कि सर ये जो non deliverable derivative contracts है, पहले तो उसमें ये वर्ड समझो कि deliverable, non deliverable का मतलब क्या? non deliverable का मतलब है कि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज नॉट गोइंग टू बी सेटल्ड. ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप बदले में मुझे पैसा दोगे या आप बदले में मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट पर अमाउंट लिखी है वो पे करोगे. नहीं, इसका मतलब है कि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट विल बी सेटल्ड ओनली एंड ओनली इन द कैश फॉर्म. इट विल बी सेटल्ड ओनली एंड ओनली इन द कैश फॉर्म. इट विल नॉट बी फाइनली सेटल्ड. इट विल नॉट बी एक्चुअली सेटल्ड. एक्चुअली सेटलमेंट का मतलब होता है कि यार मैंने अगर आपको कहा कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, इन्फोसिस के शेयर 2 महीने बाद 2000 का एक शेयर हो जाएगा, तो आपने कहा मेरे पास 20 शेयर है, कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर लिया, तो 2 महीने बाद आई विल बी परचेजिंग 2 शेयर्स. दैट इज एब्सोल्यूट सेटलमेंट. लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ चेंज इन प्राइस में आपको पे कर दूं या आपसे पैसा ले लूं, दैट इज कैश सेटलमेंट. सो नॉन डिलीवरेबल रुपी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वेयर द सेटलमेंट टेक्स प्लेस इन द फॉरेन करेंसी without any actual delivery of the Indian rupees. ठीक है. When INR cannot be freely delivered offshore due to the exchange control rules, तो उस केस में क्या होगा? The global participants like foreign institutional investors, foreign banks, corporates, they use these non-deliverable forwards or non-deliverable rupee derivative contracts to hedge or speculate on the Indian rupee movement. For example, एक contract है which is based on US dollar एंड INR, एंड उसमें अगर मैं कहूँ कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें US डॉलर INR का जो एक्सचेंज है दैट इज 83 रुपीज, लेट्स से 83 रुपीज. मेच्योरिटी डेट है 1 महीना, मेच्योरिटी डेट है 1 मंथ. ठीक है जी. अगला पॉइंट है कि इसमें जो नेशनल अमाउंट है ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट दैट इज $1 million. दैट इज $1 million और सेटलमेंट करेंसी है US डॉलर्स. सेटलमेंट करेंसी है US डॉलर. अब 1 महीने बाद आपका जो रुपी है दैट डेप्रीशिएटेड, और अगर रुपी डेप्रीशिएट होगा तो इसका मतलब $1 का अब आपको ज्यादा मिलेगा. और मान लो अगर ₹1 डेप्रीशिएट हुआ है तो अब आपको $1 के बदले में कितने पैसे मिलेंगे? सर आपको $1 के बदले में अब $1 के बदले में अब आपको ₹1 ज्यादा मिलेगा. अब उस केस में जिसने ये हेजिंग की थी उस इंडिविजुअल ने $1 मिलियन इक्विवेलेंट की बात की थी. तो $1 मिलियन का मतलब ये हुआ, अगर मैं कहूं कि ये 1 मिलियन रुपीज होता, सुनना ध्यान से, अगर 1 मिलियन रुपीज होता तो 1 मिलियन का मतलब क्या होता? 1 × 10⁶ into 1 rupee. दिस इज ऑट टू बी डन इन द कैश सेटलमेंट, लेकिन दिस इज डन इन द INR. लेकिन हमें सेटलमेंट किस में करना है? तो सेटलमेंट करना है डॉलर्स में, तो इसको डिवाइड कर दो 84 से, तो ये जो वैल्यू देगा दैट विल बी डॉलर विच इज सेटल्ड, और दिस इज द वैल्यू ऑफ डॉलर्स विच इज नीड टू बी सेटल्ड फॉर द हेजिंग प्रोसेस विच वॉज डन. तो आपने क्या किया? यू हैव हेज्ड योर रुपी. तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मुझे $1 मिलियन के बदले में इक्विवेलेंट US डॉलर आने वाला, सॉरी INR मिलने वाला. आई एम एन एक्सपोर्टर और मैंने अपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया इंडिया में. 1 महीने बाद मुझे पैसा मिलेगा. अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1 महीने बाद वैल्यू चेंज होगी तो मेरे ऊपर रिस्क है. तो उस रिस्क को ओवरकम करने के लिए मैंने इस INR का क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया. दैट इज नॉन डिलीवरेबल रुपी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैंने ये कहा कि फ्यूचर में कुछ भी हो, फ्यूचर में प्राइस कुछ भी हो, आई विल बी परचेजिंग द INR फ्रॉम यू एट 83 ओनली. आई विल बी परचेजिंग $1, sorry, I will be purchasing INR against dollars at a rate of $1 is equals to 83. अब हुआ क्या कि सर वो रेट बढ़कर हो गया 84. अब वो रेट बढ़कर हो गया 84. अब उस केस में
what you are doing, you are purchasing the rupees from this individual at 83 only. So technically you have lost this amount, लेकिन आपको इतनी अमाउंट फायदा हो गया. कैसे फायदा होगा? क्योंकि इतनी अमाउंट आपको इंडिया से ज्यादा मिलेगी, बिकॉज इंडियंस विल बी पेइंग यू अकॉर्डिंग टू 84. तो ये आपके लिए फायदा हो गया. एक तरफ आपने अपने आप को अगर सिक्योर किया, तो दूसरी तरफ उस लॉस को आप बेयर कर सकते हैं. अब मान लो अगर ये 83 से 82 हो जाता, तो इंडियंस आपको जो पे करते दैट वुड बी 82 इंटू 1 मिलियन, दैट वॉज 82 इंटू 10 टू द पावर 6, लेकिन यू वर एक्सपेक्टिंग 83 इंटू 10 टू द पावर 6 रुपीज. तो वो अब आपको कॉम्पनसेशन यहां से मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किया. इज दिस क्लियर? समझ आ गई ये बात? अरे क्लियर हो गया. अनंत बजोरिया, आपने पूछा था तो मैंने समझा दिया. ठीक है. Non-deliverable derivative contracts enable hedging in Indian rupees without physical delivery, settlement in foreign currency. Previously, only authorized dealer category 1 banks operating IFSC international banking units were allowed to participate in this, but now the standalone primary dealers under authorized dealer category 3 are also allowed to participate in the non-deliverable rupee derivative contracts, which will allow the foreigners as well as Indians to participate. Question देखते हैं. Only authorized dealer category 1 banks in the IFSC international banking unit, IFSC international banking unit, were allowed to trade rupee non-deliverable derivative contracts. That is true. Standalone primary dealers acting as authorized dealer category 3 can now transact in these derivatives for both residents as well as non-residents. For both residents as well as non-residents. That is true. Next point says non-deliverable derivative contracts require physical delivery of Indian rupees. No standalone primary dealers participation in non-deliverable derivative contract reduces market depth and liquidity. It will reduce this? No sir, it will increase market depth and liquidity. The regulatory authority for this change is SEBI under the SEBI Act 1992. The regulatory authority under this change is SEBI. No sir, under this is RBI. It's not SEBI, so answer is going to be A option only. 1 and 2, rest all the options are incorrect. मजा आया? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखो. अगला है सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स. तो सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स मतलब जो डेटा बैंक्स शेयर करते हैं विद आरबीआई. अब आरबीआई उस डेटा की क्वालिटी को असेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, टाइमलीनेस एज वेल एज कंसिस्टेंसी. और इस क्वालिटी को चेक किया जाता है ऑन क्वार्टरली बेसिस. पिछला डेटा मार्च 2025 का था. नाउ वी हैव द डेटा फॉर मार्च फॉर जून 2025. तो अगर आपका स्कोर 90 अबव है, यू फॉल इन द गुड कैटेगरी. 80 to 90 एक्सेप्टेंस कैटेगरी और एक्सेप्टेबल कैटेगरी. 70 to 80 नीड्स इंप्रूवमेंट. और अगर आपका स्कोर लेस देन 70 इट विल रेज मेजर कंसर्न्स. कवरेज की बात करें तो 87 शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स वर कवर्ड इंक्लूडिंग ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बैंक्स वर एनालाइज्ड. अब अगर मैं लेटेस्ट स्कोर की बात करूं, स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्कोर था 90.7, प्राइवेट बैंक्स 90, पब्लिक सेक्टर बैंक्स 90, फॉरेन बैंक्स 89.7. तो दिस इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. और अगर मैं ओवरऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के एवरेज की बात करूं दैट इज 89.9. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Supervisory data quality index measures the quality of supervisory returns based on accuracy, timeliness, completeness as well as consistency. That is true. First option is correct. कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा क्या कहता है? All regional banks are included. No sir, they are not included. A bank with score of 88 falls under acceptable category. 90 से ऊपर good. 80 to 90 acceptable. That is true. Small finance banks scored lower than the foreign banks. No sir, small finance banks, they were on the top, and lowest score was witnessed by foreign banks, and private banks as well as public sector banks, they were on equal scores. Key returns considered include so and so. That is true. So answer is going to be 135. A option is going to be the correct answer. Check कर लेते हैं. That is correct. अगला देखो. अगला है सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स ऑफ डिसीज्ड बैंक कस्टमर्स. आई गेस ये हमने कर लिया. 15 लाख, 5 लाख. द सेटलमेंट विद नॉमिनी और सुपरवाइजरी और सर्वाइवरशिप क्लॉज रिक्वायर्स दैट सर्टिफिकेट, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, क्लेम फॉर्म, नो सक्सेशन सर्टिफिकेट. अगर नॉमिनी या सर्वाइवरशिप क्लॉज है तो पेमेंट टू नॉमिनी डिस्चार्जेस बैंक लाइबिलिटी. नॉमिनी एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ हेयर्स.
settlement without nominee or survivorship clause, simplified up to threshold. Beyond threshold, legal documents like succession certificate is required, or probate or legal heir certificate is required. Timelines 15 days for deposit and local claims. Deposit के ऊपर डिले के केस में इंटरेस्ट मिलेगा बैंक रेट प्लस 4%, लॉकर के केस में 5,000 प्रतिदिन आपको इंटरेस्ट पेनल्टी वैल्यू देनी होगी. सब पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. सिंप्लीफाइड क्लेम सेटलमेंट applies up to 15 lakhs for cooperative banks. Nahi sir, for cooperative banks it is 5 lakhs, for commercial banks it is 15 lakhs. So first statement is wrong. Next, payment to a nominee discharges the bank's liability entirely and nominee act as trustee of the heirs. That is true. Payment to a nominee, अगर पेमेंट आपने नॉमिनी को की है तो उस केस में बैंक की जो लाइबिलिटीज हैं दैट हैव बीन डिस्चार्ज, यस सर. Or nominee will act as trustee for the years, yes sir. Without for deposits beyond threshold, without a nominee, legal documentation like succession certificate or probate are required, true. Time limit for settling deposit and locker is 15 days. It's 15 days, not 30 days. Missing persons claim up to 1 lakh can be settled with civil death declaration or FIR plus police report, non-traceable police report. That is true. अगर up to 1 lakh है, that is true. So there is no need to wait for court orders. There is no need to wait for court approvals. So in that case, the amount can be withdrawn. If it is more than 1 lakh, then court orders are required. So answer to this is 2, 3, 5. B option is the correct answer. काफी लोगों ने सही आंसर दिया, बढ़िया. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? RBI renewal of statement of commitment to foreign exchange global code. So RBI has renewed its statement of commitment to the foreign exchange global code in 2025. Foreign exchange global code is non-binding voluntary principle of foreign exchange market participants. Purposes ensure integrity, fairness, transparency and effectiveness. Ensure integrity, fairness, transparency and effective functioning of $7 trillion per day global forex market. First published in 2017. Updated in July 2021, and now the second update is done in the December 2024. So to include this second update into the statement of commitment, RBI has come up with this renewal, and this renewal was in news. ठीक है जी, और कुछ important नहीं है. Question solve करते हैं. The foreign exchange global code is legally binded? No, it's not legally binded. The Global Foreign Exchange Committee was established in 2017. That is true. RBI renewed statement of commitment encourages voluntary adherence by Indian banks, dealers as well as corporates. काफी हद तक yes. Updates in 2021 and 2022 address ALGO trading, transaction cost analysis, disclosure and technology market structures. That is also true. Renewal of SOC by RBI ensures mandatory compliance by all the participants in INR trading. So mandatory नहीं है, because if it is not binding on RBI, RBI cannot bind it on the participating authority. So answer is going to be B option. It's not mandatory, but RBI ने इसे accept किया. If you will be accepting it, it will be a good. It will give you global standard equalization. That I can say. ठीक है जी, clear हो गया. अगला point. RBI 2025 Cooperative Bank investing in NABARD SSC. इस पे बात करेंगे, but before that 8:39 to 8:42 एक break ले लेते हैं. Let me have some water. And then we have almost 10 more questions to go. तो उम्मीद है कि 9:20 बजे तक आपका जो ये सेशन है that will be completed. ठीक है जी, thank you so much. Wait for me. I'll be right back in 3 minutes.
Okay then, let's get started. Done. चलो ध्यान देना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी आसान है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को अलाउड है दैट दे कैन invest in government securities in order to achieve their SLR targets, but along with that they can invest in the other instruments under the non-SLR investment targets, which is up to 10%, which is up to 10% of the deposits, which is up to 10% of the deposit. अब उसके साथ साथ state cooperative banks, they have been allowed to invest in the RBI, in the NABARD's established shared service entity in April 2025. अब अगर इसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन्वेस्ट करेगा तो दैट इन्वेस्टमेंट विल बी अलाउड एंड दैट विल नॉट बी हैम्परिंग द नॉन SLR इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट कैप। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट कैप 10% ऑफ डिपॉजिट है तो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं इन शेयर्ड सर्विस एंटिटी, इट वोंट बी हैम्परिंग दैट 10% वाला लिमिट, एंड हियर द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अप टू 5%. Here the limit of investment is up to 5% of owned funds, up to 5% of the owned funds of the bank. बस ये दो ही चीजें तो आपको याद रखनी, इसके अलावा कुछ और इसमें याद रखने लायक है नहीं, ये आप याद रखिएगा. Exemptions में not continued in 10% overall prudential cap, exemption from unlisted securities restriction effective from 26th of September 2025. Question देखते हैं. Question says state cooperative banks and central cooperative banks can invest up to 5% of their owned funds in SSE share capital through SSE investment is continued under the existing 10% prudential norm for the non-SLR investment. No sir, it is not counted under it. SSE investment is exempted from the unlisted security restrictions applicable to the cooperative banks. That is true. That is absolutely true. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. अगला पॉइंट क्या कहता है सर? अगला पॉइंट कहता है डायरेक्शंस आर बेस्ड ऑन सेक्शन 35A and 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. सो दीज डायरेक्शंस आर बेस्ड ऑन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, section 35A as well as 56. That is true. Directions allow cooperative banks to invest in SSE after obtaining RBI prior approval for each investment. After obtaining RBI prior approval for each investment, RBI directions do not require prior approval for each investment. Investment allowed within the specified limit without any approval. So keeping that in mind, 1, 3, 4 are correct. So B option is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है regarding the RBI scheme for facilitating accelerated payouts in operative accounts and unclaimed deposit. अगर आपको याद हो तो we are talking about that when a deposit is or the deposit account is not utilized or it is not used for 2 years, then we call it as what? So we call it as inoperative account. और अगर 10 साल तक उसमें कोई क्रेडिट, कोई डेबिट, कोई क्वेरी नहीं है, then it will be termed as unclaimed deposit. तो ये जो हमारा unclaimed deposit है, ये जो हमारा unclaimed deposit है सर, इस अनक्लेम डिपॉजिट को ट्रांसफर किया जाता है इनटू द डिपॉजिटर्स एंड एजुकेशन अवेयरनेस फंड. लेकिन प्रॉब्लम क्या है विद द बैंक्स? दीज अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट count is increasing day by day. SBI is having the highest value of unclaimed deposits with itself, and RBI wants to clean this unclaimed deposits which are maintaining with the bank. RBI चाहता है कि bank should reach to its customers, bank should reach to the nominees, bank should reach to the legal heirs, so that ये जो unclaimed deposit का count है वो कम हो जाए. अब उसके लिए RBI ने पहले क्या कहा था कि सर बैंक जो है, अगर बैंक के पास कोई क्लेम का रिक्वेस्ट आएगा, so bank will first pay the claim. After paying the claim, bank will raise the request of the claim in front of RBI if the funds are transferred into DEF in the last 10 days of the month, in the first 5 days of the month जहां आप रिक्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद in the last 10 days claim will be transferred. ठीक है जी. तो ये बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें नई चीज क्या आई सर? आरबीआई ने कहा अभी भी बात नहीं बन रही, बैंक्स अभी भी उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो आरबीआई ने कहा ठीक है, बैंकों को लालच देते हैं, बैंकों को सपोर्ट देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, और उस इंसेंटिव में ये कहा गया कि अगर आपका एक अकाउंट इनऑपरेटिव है,
अगर आपका एक अकाउंट इनऑपरेटिव है और पिछले 4 सालों से अप टू 4 इयर्स वो अकाउंट यूज नहीं हुआ, तो अगर आपने उस अकाउंट को रीएक्टिवेट कर दिया, then in that particular case you will get an incentive of 5% of the deposit or 5,000, whichever is low. If it is not operatable or it is not in a category of operating account for 4 to 8 years, उसको अगर आपने रीएक्टिवेट किया, 6% will be the incentive, 6% of the deposit value or 10,000 cash price. 8 to 10 years, इस केस में you will get 7% of the deposit or 15,000 cash price, whichever is low obviously. और 10 साल के बाद you will get 7.5% of the deposit. अब RBI से पैसा आएगा आपको, या फिर पैसा मतलब जो डिपॉजिट है वो तो आपने डेफ में ट्रांसफर कर दिया, तो RBI पे करेगा बैक, और उसके साथ साथ RBI आपको इंसेंटिव भी देगा, एंड दिस इंसेंटिव इज गोइंग टू बी 7.5% और 25,000. लेकिन ये जो स्कीम है, दिस इज गोइंग टू बी वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर फ्रॉम 1 October 2025 टू 30th September 2026. ठीक है जी. RBI will settle the approved claims within 30 days. Remember that जो भी आप क्लेम की बात करेंगे, RBI will settle the approved claim, जो भी आपके approved claims है, that will be settled within 30 days. This is something which you need to remember. क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन आसान होगा, आई गेस मैंने काफी जल्दी में एक ही टॉपिक समझा दिया, मजा आया होगा. Under the RBI's accelerated payout scheme, the incentive structure for banks is uniformly capped at 7% of the reactivated or settled amount irrespective of the deposit age. नहीं sir, it will depend on the deposit age. The highest possible incentive payout per account is 25,000 applicable only to the deposit inactive for 10 years or more and already transferred to DEF. हाँ, अगर एक बार DEF में ट्रांसफर हो गया तो 25,000 रुपए आपको मैक्सिमम फंड्स मिलेंगे. दैट इज करेक्ट. अगला पॉइंट है, द स्कीम कवर्स बोथ इनऑपरेटिव अकाउंट्स एज वेल एज अनक्लेम्ड अकाउंट्स. ट्रू क्लेम्स अंडर द स्कीम मस्ट बी फाइल्ड क्वार्टरली एंड सेटल्ड बाय. नो, अगर आप इसके क्लेम्स की बात करेंगे, सो क्लेम्स अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, दे विल बी claims under this particular scheme. The claims are quarterly filed. Claims under the scheme must be quarterly filed, and the scheme will be quarterly filed. That is true, and settled within 30 days by RBI. That is true. The scheme is permanent measure. No sir, it is a temporary measure which has been introduced only and only for 1 year. So answer is going to be 2, 3, 4. B option is the correct answer. ठीक है जी, समझ आया. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन कहता है आरबीआई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन. तो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के केस में आरबीआई हैज टॉक्ड अबाउट द टू फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन. और ये जो 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है उसमें आरबीआई ने क्या कहा है कि एक फैक्टर आपका डायनामिक होना चाहिए, एक फैक्टर डायनामिक होना चाहिए और एक फैक्टर आपका यूजुअल हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है. अब उस केस में क्या है सर, जो डायनामिक है ऑब्वियसली दैट इज वन इज ओटीपी and other dynamic features can be used. So RBI is talking about the minimum 2 factors of authentication for every digital transaction, combining the elements, something you know, that is password or PIN, something you have, OTP card, or something you are, that is the biometric. One factor must be always dynamic and unique to each transaction, such as OTP or dynamic CVV, ensuring no reuse vulnerability. Issuers may also allow the customers to choose their preferred authentication factors while ensuring each remains independent and uncompromised. ठीक है जी. तो ये एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट है which will be applicable from 1st of April 2026. इसमें we have to talk about risk based approach is mandated. Issuers must monitor attributes such as devices, location, transaction behavior to determine if additional authentication layers are required. In case of high risk cases, issuer may use tools like DigiLocker confirmation to complete the transaction. Issuer bear full responsibility for maintaining the integrity of the authentication system and required to fully compensate the customer if losses occur due to the non-compliance by the regulated entity. Cross-border transactions are generally exempted. However, for non-recurring cross-border card not present transactions, issuer must implement additional validation mechanism by next year, that is 1st October 2026, register bank identification number with the card network. ठीक है जी, ये है पूरी कहानी. इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द न्यू डायरेक्शन मैंडेट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल क्रॉस बॉर्डर एंड डोमेस्टिक डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस विदाउट एग्जाम्पशंस. इसमें अगर हम बात करें विदाउट एग्जाम्पशन की, क्या ये पॉइंट करेक्ट है? नो सर,
ये जो नई डायरेक्शन है क्रॉस बॉर्डर, इसमें एग्जाम्पशन है, तो इट कैन नॉट बी included as cross border without exemption. At least one factor of authentication must be dynamic and unique to the specific transaction. That is true. Issuers are required to compensate customer. Issuers are required to compensate customer in full for any loss arising due to non-compliance. अगर बैंक की गलती है तो बैंक आपका पूरा का पूरा compensation देगा. Non-recurring cross-border card not present transaction must comply with validation mechanism by 1st of October 2026, not from 1st of April 2026. All early non-recurring cross-border transaction must have validation mechanism by 1st of October आएगा. This will be 1st of October ना. B option will be correct, not C. Sorry for the wrong answer. It should be B, guys. Mark कर लेना. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. What is the next question? RBI interest rate on advances. RBI interest rate on advances का मतलब क्या? इसमें कुछ नहीं है सर. It's basically talking about the three things. First one is RBI has amended the RBI interest rate direction 2016 circular on reset of floating interest rate for EMI based personal loans and related issues have been done. So what it says that जो आपका floating loan है, in case of floating loan at the time of reset, bank can give the offer to the customer that they can shift to the fixed loan. They can shift to the fixed loan. और ये जो reset है, that is done in case of EBLR on quarterly basis. The reset is done by bank in case of EBLR at quarterly basis. So this is effective from 1st of October 2025. Package aims to increase borrower choice, give measured pricing flexibility to banks for customer retention and clarify switching mechanism at rate reset. Key changes: one, bank now have conditional flexibility to reduce the spread component for a loan category earlier than 3 years. This is the second point कि सर अब जो आपका spread component है, जैसे अगर अब मैं बात करता हूँ EBLR में you have repo rate plus you have the other spread component which include your cost of operation, which include your negative carry on CRR and other. तो उसकी वैल्यू को पहले आप 3 साल से पहले रीसेट नहीं कर सकते थे, बट नाउ दिस कैन बी रिवाइज्ड इवन बिफोर 3 years. This can be revised even before 3 years in order to retain the customers, in order to provide low lending rates to the customer so that the customer should stay with the bank for longer period. That is something which you need to remember in the entire story. अब इसको solve करते हैं. पहला, बैंक में reduce the other spread components earlier than 3 years only when done for customer retention and provided the reduction is justifiable, applied non-discriminationary and in terms of a written board approved policy. That is correct. ये बिल्कुल word to word correct statement है. अगला point क्या कहता है? Regulated entities are required to offer every borrower the option to switch to a fixed rate at every reset of floating EMI based personal loan. नहीं sir. No, this is not correct because the point is regulated entity are required to offer every borrower the option to switch. This is may. This is not always. This is may. This is not always. तो यहाँ पे required mandatory नहीं है. It is a may condition. The effective date for these amendments is 1st October 2025. Regulated entities must operationalize policy, IT staffing, communications by that date. That is true. That is absolutely correct. A bank's board approved policy may specify the maximum number of times a borrower can switch as well as the charges which are going to be charged during the switch. That is also decided by the board. If a large number of borrowers elect to switch to fixed rates at reset, bank face no interest rate or asset liability management implication because floating liabilities automatically offset the change. Is this true? Is this true? So this is incorrect. क्यों? अगर बहुत सारे borrowers हैं, they switch to fixed at reset, banks do face interest rate risk as well as asset liability management implications. The direction flagged that bank must manage the pricing and risk, update accounting and ALM, and be prepared operationally. The amendment does not eliminate these risks. ठीक है जी, clear हो गया? Is this point clear? So the answer to this particular question is E statement. अगर यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी है तो पूछ लो, otherwise I will be
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आरबीआई लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर के अगेंस्ट 1 अप्रैल 2026 से इंप्लीमेंट होगा। अब ये जो लेंडिंग है दैट विल बी प्रोवाइडेड टू दी नो लोन्स फॉर परचेज ऑफ गोल्ड सिल्वर और गोल्ड बैक्ड असेट्स, नो लेंडिंग अगेंस्ट प्राइमरी बुलियन, नो रीप्लेजिंग ऑफ बोरोअर्स गोल्ड और सिल्वर। एक्सेप्शन कब है, वर्किंग कैपिटल लोन फॉर दी मैन्युफैक्चरर्स हु आर यूजिंग गोल्ड और सिल्वर एज अ रॉ मटेरियल, सिर्फ उस केस में दैट इज अलाउड। उसमें भी लिमिट्स है, मैंडेटरी लोन above 2.5 lakhs, renewal will be done 1 kg, limit है ornaments की, silver ornaments 10 kg, coins up to 50 grams, silver coins up to 500 grams. Tenure cap, bullet repayment loans for consumption purpose limited to a maximum 12 months. फिर किस बेसिस पे कैलकुलेशन होगा of the stored value of the security, that will be on the basis of SEBI commodity exchange prices. Valuation is the lower of 30 days average price of the previous days और the previous days closing price, उसके बेसिस पे किया जाएगा और एक्चुअल वैल्यू इंक्लूड की जाएगी, स्टोन्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। फिर उसके बाद लोन टू वैल्यू 85%, 80%, 75%, जैसे जैसे लोन की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे लोन टू वैल्यू परसेंटेज इज डिक्रीजिंग। 7 दिन के अंदर जैसी लोन खत्म होगा, 7 वर्किंग डेज के अंदर लोन खत्म होने के बाद आप भैया बैंक का सब कुछ वापस कर दीजिए, बैंक का सब कुछ वापस कर, कस्टमर का सब कुछ वापस कर दीजिए, यानी कि गोल्ड एंड ऑल वापस कर दीजिए। लेकिन अगर आप नहीं ऐसा करते 7 दिन के बाद आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज होगी जो कि 5,000 रुपए प्रतिदिन होगी। Unclaimed collateral, if the collateral remains unclaimed beyond 2 years after the repayment, then you should report to the customer service committee or board. This is something which you need to remember. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्राइमरी गोल्ड एंड सिमिलर फॉर्म्स आर नॉट अलाउड एज कोलैटरल, ओनली ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर are accepted as collateral under this particular direction. That is absolutely true, sir. Revise maximum loan to value ratio, require loan above 5 lakhs to have loan to value ratio of 85%. No, sir. Loan to value ratio is 75% in case of more than 5 lakhs, up to 2.5 lakhs 85%, 2.5 to 5 lakhs 80%. Next we have is credit assessment is mandatory for loans exceeding 2.5 lakhs and renewals top-ups are allowed only if the loan is standard and loan to value limits are met. तो इसका मतलब क्या कि सर ये जो directions require a credit assessment for loans over 2.5 lakhs and renewals or top-ups are permitted only if existing loan is standard and it is within the prescribed loan to value limit, then only it will be included. So this is correct. Bullet repayment loan for consumption purpose have maximum tenure cap of 12 months. This is wrong. Direction impose a maximum tenure cap of 12 months for bullet repayment loans taken for consumption purpose. So it is not true that there is no cap. Clear आ रही है बातें? So bullet repayment loan for consumption purposes have maximum tenure cap of 12 months under the new direction. This is wrong. समझ आई ये बात? Is this point clear? So the direction impose a maximum tenure cap of 12 months for bullet repayment loans taken for consumption purpose. So it is not true that there is no cap. There is a cap. Remember that. Next we have is the validation of collateral must use the lower of 30-day average price or the previous day closing price, only the intrinsic value. That is correct. So answer to this particular question would be ACE. ACE का मतलब second option is correct. ठीक है जी, क्लियर हो गया, सबको सही है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू आरबीआई हैज कम अप विद द बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो आपके परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, दीज आर बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट्स विद नो मेच्योरिटी वेयर द बैंक प्रॉमिसेस यू टू पे द रीपेमेंट, where the issuer promises to pay only the interest for the lifelong time, but it will not be redeemed. It cannot be redeemed. There is no maturity defined. So in case of authorized tier 1 capital, there was a condition that in case of authorized tier 1 capital, 49% of authorized tier 1 capital should be
up to 49% of authorized tier 1 capital should be perpetual debt instruments, but now it has been revised. Now it is 1.5% of RWA, that is risk weighted asset of the bank, is equals to the PDI limit. पढ़ लेते हैं, कुछ खास नहीं है. So perpetual debt instrument that is issued in foreign currency, perpetual debt instrument which is issued in foreign currency or as a rupee denominated overseas bond within the additional tier 1 capital, applicable from 1st October 2025. It is a component of tier 1 capital, that is true. Can be callable after 5 years, but that is not defined. Earlier the limit was 49% of the total authorized capital, but now it has been revised. It has been said that it can be maximum 1.5% of risk weighted asset. Example मैंने उस दिन भी लिया था, दोबारा ले रहा हूँ. अगर बैंक का risk weighted asset 10 लाख करोड़ है, authorized tier 1 capital 80,000 करोड़ है, तो earlier 49% of authorized tier 1 capital was around 39,200 crores, लेकिन अब ये 1.5% of RWA, which is 1.5% of 10 lakh crore, which is only 15,000 crore rupees, can be maintained in the form of perpetual debt instrument issued in foreign currency and masala bonds under the authorized tier 1 capital. ठीक है जी? Sorry, additional tier 1 capital, not authorized, additional tier 1 capital. Question solve करते हैं. Under the 2025 directions, PDI issued in foreign currency or as rupee denominated bonds overseas can be included in additional tier 1 capital up to 1.5% of RWA based on latest audit financials. That is true. इसमें कोई problem नहीं है. This is word by word the correct statement. I hope it is clear to you. Next point क्या कहता है? So the earlier framework permitted inclusion of PDI up to 49% of totally additional tier 1 capital का 49%. PDI are perpetual hybrid instruments forming a part of additional tier 1 capital and are callable only after minimum 5 years and that too RBI approval. Yes sir, RBI के approval के बाद ही call होगा. Linking the new cap to RWA instead of additional tier 1 capital directly reduces the absolute permissible overseas PDI volume, enhancing capital quality and stability. Yes sir, that is true. अगला point क्या कहता है? Coupon payment on PDI are mandatory contractual obligations and non-payment is treated as default under Basel 3. ये important है, ध्यान से सुनना. Coupon payments on PDI, they are discretionary, they are not mandatory. Remember, coupon payment जो है, they are discretionary, they are not mandatory. Non-payment does not constitute a default under Basel 3. This is a defining feature of additional tier 1 instrument. Remember that Yes Bank के साथ ऐसा ही हुआ था. जब Yes Bank के ऊपर issues आए थे तो Yes Bank ने अपने perpetual debt instruments के बदले में interest देना बंद कर दिया था. तो लोग पहुंचे कोर्ट के पास, तो RBI भी पहुंचा और RBI ने कहा नहीं सर, ये अलाउ करना पड़ेगा वरना बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी. There could be a situation that Yes Bank may fail. So in that particular case, it was allowed legally that no interest will be paid on these perpetual debt instruments. So that is the case. So it is not mandatory, it is discretionary. Remember that. Answer is ACD. Second option is correct. Moving on to the next question. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? SIDBI and SEBI related कुछ updates हैं. पहला, SEBI extension on retail algo trading framework for retail investors. Concept क्या है? algo trading we have already discussed. इसमें timelines क्या है? सर original rollout 1st August 2025, अब उसको extend किया 1st October 2025, अब उसे और extend कर दिया 1st April 2026. लेकिन अब यहाँ पर 3 milestone set किए. By 31st October 2025, registration of at least one retail algo strategy should be done by the by the stock brokers. Milestone 2 is full API registration and exchange approval for all the algo products. Milestone 3 is mandatory participation in one such mock trading session proof submission to the exchanges. ये आपको करना पड़ेगा. नॉन कंप्लायंस के केस में you will not be allowed to onboard new clients from 5th of January onwards, 5th of January 2026 onwards. ठीक है जी. अगला जो पॉइंट है, that is SEBI has launched मित्रा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट
tracing and retrieval assistant. So this is basically a centralized platform for investors, nominees, and legal heirs to trace and reclaim unclaimed as well as inactive mutual fund holding, which has been introduced. It's a joint management CAMS as well as Kinfin Technologies Limited, India's two SEBI registered qualified RTAs, that is qualified registration and transfer agent. ठीक है जी. Moving on to the next, ये सब तो हो गया. Third is SIDBI. SIDBI's Development of Industry Association Scheme. What is this scheme all about? So, SIDBI is going to be the implementing agency, transform MSME clusters into the innovation-driven, digitally connected and self-sustaining ecosystem. Model is empower industry association to become catalyst for cluster development rather than just representative bodies. So cluster transformation into demand-driven approach, digital environment, collaborative governance. These are the targets aligned with MSME Vision 2030, complementing earlier SIDBI initiatives like Mission Swalamban as well as Digital Prayas. Okay, last question of the evening. SEBI Retail Algo Trading Framework rollout initially scheduled for 1st October. Now it will be from 1st April 2026 to allow compliance with milestone-based registration and testing format. That is correct. First statement is absolutely correct. इसमें कोई problem नहीं है. Moving on to the next statement. Under the Mitra platform, SEBI allows centralized retrieval of unclaimed mutual fund units. Centralized retrieval of unclaimed mutual fund units using only Aadhaar authentications to ensure confidentiality. That is incorrect. That is incorrect. Sir, यहाँ पे Mitra allows retrieval using PAN, mobile number or email ID, not Aadhaar cards only. That is a point. Mitra is jointly managed by CAMS as well as Kinfin, both which are the SEBI's recognized qualified RTAs, consolidating data from all AMCs. That is true. DIA scheme by SIDBI. DIA scheme by SIDBI mandates top to bottom intervention. No, sir, it mandates bottom to top. It mandates bottom to top or demand driven approach, empowering industry association to define cluster needs, not a top down central intervention. That is not a case. Industry portal under DIA function as digital B2B platform for MSME knowledge exchange, collaboration, data driven governance. That is correct. So answer is going to be first option. A, C and E are correct. ठीक है जी. क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया? अगर ये क्लियर है, समझ आया हो तो एक बार यस सर जरूर टाइप करना so that we can conclude the discussion. We have solved 26 questions today और लगभग 50 क्वेश्चन कल किए थे, तो 75 questions have been already done on the circulars और अब कुछ थोड़े जो हमारे लाइट सर्कुलर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आने के चांसेस दैट आई विल बी इंक्लूडिंग इन माय मैराथन क्लासेस व्हिच आर गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट वीक. बताना जरा कैसा लगा सेशन. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. आई विल बी कैचिंग यू ऑल इन द अपकमिंग सेशंस टू गो एंड अभी अगले 5 से 10 मिनट में ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. Thank you so much. Do share your feedback in the comment section. If you have enjoyed the session, do share the feedback in the comment section itself. Thank you. Bye-bye. Take care. See you soon.